5th Universal Healthcare Symposium, and the theme for today is Healthcare Service Development and Innovation. In this session, we will be discussing primarily on primary percutaneous intervention. So, to start with the recitation of Holy Quran, I invite Dr. Sama Khan. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. O believers, stand up as firmly as possible with justice while you are witnesses to Allah. Even if you are standing by justice against yourselves or your parents or your closest relatives, or even if he is wealthy or poor. Allah has authority over both of them. Then don't you follow your empty desires, that you might become deviated. And if you twist your words or avoid, then Allah is all aware of what you do. Allah Almighty has spoken this verse. Now I call on stage the chair of today's session, Dr. Asif Khan. He is a graduate of King Edward Medical College of West 2003. He is a consultant interventional cardiologist and has been working in UK since 5 years as a consultant. He is a member of Royal College of Glasgow and a fellow of Royal College of Edinburgh. Dr. Asif Khan. Assalamu alaikum. Welcome to all the professors, worthy teachers, fellow students. I will start my session. Before I do that, I would like to invite the chairs who is going to be with me in the panel discussion. And I would like to do some citations of my chairs at the moment, but I would like, first of all, our worthy professor, and my teacher from 2003 when I started my house job in cardiology, Professor Pradeep Sattva. Please come on the stage, please. Thank you. My other co-chairs for the sessions, I will be inviting Dr. Tariq Azim, who is a consultant cardiologist in Derby Hospital in the United Kingdom. Dr. Tariq Azim, please take a chair. My other co-chair, Dr. Rizwan Naseed, is not here, but I think his
executive directors are here. So I would like to invite Dr. Rizwan Aziz to please on the stage as well. Thank you. Also my co-chair, Dr. Bilal Ubaidi, who is a current director of Punjab Institute of Cardiology. If he is around, he can come on stage. I think he's maybe on the way, so as soon as he comes, we'll get him on the stage. Thank you. And also we're waiting for a couple of more guests, our panelists, and as soon as they will come, they will join us on the stage. So can you get the slides, please? They will be coming. That's fine. Thank you. So, my talk today is on primary PCI, which is a percutaneous intervention, and I'm going to present you what is the UK service model and how we started in UK. Because at the moment we always think about how the primary PCI will work in Pakistan, and I have taken a views of a lot of colleagues, and yes, it is a big hurdle, it is a big challenge, but we started from the scratch as well. And it was not that long ago. We're talking about maybe 2006, 2008 when we all started. So it's not like we're talking about a long time. Last 15 years, we have achieved this. This is the hospital where I work. So this is a new state-of-the-art hospital. So we're going to talk about the contents of percutaneous intervention and what is the evidence behind it? Why are we doing percutaneous intervention as a primary PCI? Why we think it's an emergency? How the treatment has started as in terms of national guidance? What are the minimum requirements required for primary PCI? The primary PCI without surgical backup has started. What is a cath lab team, which is a cardiac catheter team? How we consent for PCI, because that's a very important generic issue, and it's all come by the communication. And we'll talk about handover and how the hospital care and the rehabilitation, and what are the international or European Society of Cardiology guidelines in it. So very basic. I'm not going to go in the details about primary PCI, how we, in terms of the mechanism, how we do it, because you can all read them in your textbooks. I think we're talking about how the primary PCI has helped, because traditionally in Western countries or developed countries, we used to use fibrinolytic therapy or thrombolysis in simple words. And we know we are still using thrombolysis in Pakistan a lot. But primary PCI has developed even some centers. And primary PCI is a blockage in the coronary artery. It's an acute presentation, and as soon as we see there's a blockage, we bring people for a primary PCI and we deploy a stent. Around 30% of the people are still contraindicated to thrombolysis. So 3 out of 10 people, you can't even give thrombolysis. If you take a proper history, they will have a contraindication. And the success rate of thrombolysis can be 60 to 70%. So even you thrombolyze these people, take a risk of high risk of bleeding, they still have no success in around 40% of patients. So the Department of Health in England had published this report in 2006. So we're talking about 15, 16 years ago, not that long. And they have, after the evidence from the primary PCI trials, that this service should be running 24/7, 7 days a week. And it has shown that it can save heart attacks, stroke and deaths in a vast quantity of patients. So the rapid boom of primary PCI started from 2008. So we're talking about 14 years ago. And at that time, 46% of patients who were in England were still receiving reperfusion therapy.
and they've been after that, they've been treated with primary PCI. 2011, just over 3 years, more than 90% of people were getting primary PCI. So you can see, we started with less than 50%, and then within 3 years, we've gone above 90%. So it was a transition period, it was a challenge, but then everybody picked it up. And then we never looked back from there. By 2011, half of the PCI center in NHS England, they were doing primary PCI. And what was the evidence? So if you go and search on the trials, even on Google, you can read about Prague trial, Prague 1, Prague 2, and the Danami trial, Danami 1 and Danami 2. And you can just look at the graphs and you can know the difference. How this primary PCI had reduced the mortality, the stroke rate, and the most importantly, the recurrent infarcts. So people can have another MI, but that has come down from 6.3% to 1.6%. And we have seen this trend over 18 months in the trials. So on the basis of these trials, then the National Infarct Angioplasty report has published, and they have emphasized that all the people who are eligible for primary PCI with ST elevation, they should go to the primary PCI center. They will bypass all the district general hospital, and the ambulance crew take them directly to primary PCI center. And it has shown huge reduction in the mortality. At the end of the day, it has reduced from 9.9% for those people who have received primary PCI than compared to nearly 15% who was given thrombolysis. So what is a UK structure? What is a minimum structure to develop this service? You need to have at least 2 dedicated cardiology catheter suites. 2 lab laboratories are enough to running this service. The European Society of Cardiology guidelines suggests that it should have at least 0.6 million to 1 million people to have a state-of-the-art primary PCI center. So if you look at the population of Lahore, you can then imagine how much primary PCI centers are to be. I don't think so we can work with one primary PCI center. We're talking about a huge number of population here and the surrounding areas of Lahore, and definitely we will talk about it in our panel discussion. All these catheter suites have digital imaging, and you can store the images up to at least 8 years. That was the minimum requirement. So if the people are coming back with further procedure, they can look at back their procedures. Radiation protection is mandatory. So these procedures are done in high X-ray radiation, and it's very important for the patient and your operators, your nurses, that they should be protected from radiations because of the hazards of radiation. The basic equipment which is required for resuscitation should be available in every cardiology lab. And that can include a defibrillator, a balloon pump, an anesthetic machine, a blood gas analysis, and a clotting time machine. Any center which can do a minimum of 400 cases a year, again, that's not a big number for the population we're dealing, they should be doing PCI or primary PCI if they have all the minimum requirements. As we said, they should have at least 2 labs, and the important thing for the PCI operators that they should do at least 150 cases over 2 years or 75 cases in a year, at minimum of 20 primary PCI cases in a year, which is again not a big challenge. I think all the operators with this number of huge population with so much coronary artery disease, they can achieve this number. Majority of UK primary PCI center have at least 6 intervention cardiologists on their rota, and most of the center push up to 10. So even on the consultants like us, we don't feel burnout. If you have 10 people on the rota, you may have to do 1 night shift every 10th day, which is doable. When we think about primary PCI, in the past there was a big discussion, do we need a cardiac surgery or vascular surgery backup, because these are high-risk procedures. But then there was a lot of trials done, and this is one of the biggest trials, which has shown that primary PCI done in these centers, there's no difference between either you with a surgical backup on-site or off-site. And also, when we think about the people who are going through
In the past, they used to require emergency bypass if you have a failed procedure, but that figure has come down to 0.05%. So you can achieve a success rate of 99% plus in a primary PCI without needing a surgery on the table. So it is a very successful procedure. I just want to touch this small topic about consent, but it is a huge in terms of communication gap, which we always feel that our patient, our relatives of the patient, they have no idea what the patient is going to go through. And the consent process has to be quick and very clear, because you're going to take them for emergency procedure. It carries a risk of 1% of dying on the table, 1% of stroke, or any other bleeding complication. So consent has to be very important. But in the setting of primary PCI, you don't need to do any paperwork. A clear verbal instructions to the patient or relative is enough. Within 30 seconds, you can tell them this is a life-saving procedure. And if you don't do it, there's a high risk of dying. And that has to be clearly documented after the procedure. You can put them in the notes on your report that patient has been verbally consented. Another very important communication gap which we have is no handover. So when we talk about handover, when these people are admitted in future by our rescue 112 people and they bring the patient to primary PCI center, they will tell the basic history of the patient, what the medication they have given, what pain relief they have given, have they given any medication to reduce the blood pressure or like a GTN, and they just hand over to the cardiac catheter suite nurses. And this basic handover is required. Every institute, if they have to progress and have to be successful, there should be a monitoring. There should be a complete audit, because you need to monitor your success, you need to monitor your cases which are naturally, that will be presented in your mortality meeting, because you can have unexpected deaths for these people. And we always learn from our complication and unexpected deaths. And there should be a transparent process for whole institute where these centers, these procedures are done. What is a post-operative care? When we say operation, it's not a big operation in terms of we go do in local anesthetic and 95% of procedure are done through your radial artery. So in terms of post-operative care, you're talking about a normal standard coronary care unit, CCU unit, care up to 48 hours. Majority of our primary PCI patients go home after 48 hours. And if you just think about a burden, so for example, if you have one primary PCI center, it's not going to take the whole burden of the Lahore. After 6 hours of the procedure, if they are stable, they can go to their local hospital. So it's not like that you have to keep every primary PCI patient in your hospital where you do the procedure. After 6 hours, they can go to your local hospital, or after 48 hours, they can send home. And you have to do their basic primary prevention medication, and ideally, you should do their echocardiography. This is a very important aspect, which is called cardiac rehabilitation, and we can do a lot better even whatever primary PCI or percutaneous intervention we do in our setup. And again, that's rehabilitation start while you are inpatient. So that can be very basic information about how they're going to manage if they have a chest pain or if they have any issue with driving or risk factor. They just need basic leaflets and somebody need to talk to them before they go home. In UK, we have British Heart Foundation leaflet booklets. There is a phase 2 rehabilitation, phase 3 which is done in the community. So we have specialist nurses in the community who look after this patient up to 4 to 6 weeks. They bring them back, they all go through some treadmill test, breathing test to feel back to normal. The basic challenge which we still get even in Western or developed world is the public awareness. Lot of people still sit at home for hours and hours with this chest pain, thinking it might be a muscular problem, it can be indigestion. In a country like us, we have so much gastroesophageal reflux disease. I feel this will be more challenge for us how we investigate or how to take a proper history. Thank you very much. So even you can say that at least still
40% of people are presenting late. In last 2 minutes, before I close, I'm going to just highlight what is last European Society of Cardiology guidelines. And you can see that from 2012, when the primary PCI started, more than 90% UK, and over 5 years, we have achieved radial access is your default access. So we rarely do femoral access now. Our 95% is done by radial. Now we're using drug-eluting stent rather than bare metal stent, and we use all the latest technique. And very important aspect on the bottom, the oxygen. Not every patient need oxygen. Only if your SATs are below 90%, then you need oxygen. Otherwise, you don't need it. I'm not going to go into all the detail of the guidelines, but the important aspect is your ECG monitoring. So we will talk about what ECG facilities we have, but standard in UK, if you have a chest pain, either you see by paramedics or you come to hospital, you should have ECG done within 10 minutes, and the decision should be taken straight in there that if you need a primary PCI. This model is a European model, and if you see this emblems over there or the buildings which are your hospitals, the important thing is the timing, because time is your muscle. So, thank you. You have to deal with this primary PCI within 2 hours or within 90 minutes. So when the patient calls for help, when they have a chest pain, they should call for help, and after it's accepted for primary PCI center, they are dealt within 120 minutes or within 90 minutes from reaching to the center. So it is a very quick teamwork. Every team member has to be present when the call is made for primary PCI. Again, we can talk more in detail, but I think in future, inshallah, we're looking at this primary PCI will establish in Pakistan, which will naturally going to help to save thousands of lives. We still can manage these people if you have a delay of up to 2 hours. You can still thrombolize. So if you feel this patient cannot reach primary PCI center, you can still thrombolize. But within 6 hours to 24 hours, you should bring them back to the cardiac catheter lab, because they will still need a PCI, because we know the success of primary PCI is not 100%. So I'm going to, this is my last slide, and these are the timings, and these are the timings we need to look, because these timings can save your cardiac muscle. So you have to do ECG within 10 minutes, you have to deal within 120 minutes, which is 2 hours, otherwise you thrombolize, and within the wire crossing, the coronary artery has to be within 1 hour. Thank you very much. So I will have next 3 to 4 minutes for quick questioning. So if people have any question, because we have a full panel discussion as well at 10 o'clock after all the 3 talks, but I'm happy to take any questions. While we are waiting for questions, I would like to welcome also Professor Saqib Shafi Sahab as well on the stage with us, and Bilal Mohiuddin Sahab just came, so please take a seat on the chair as well. Big hand please, thank you. Any questions, students? Anything you have before we go for next talk? Right. Thank you very much for this wonderful presentation. I just wanted to go for a country like Pakistan, where the facilities are. I think naturally if you have a successful thrombolysis, these patients still need to be looked at. But you can wait for these people. They can come back to your lab after 24 hours or within 48 hours. Ideally, you can do that. But we know that primary PCI, if you look at the thrombolysis data from the NAMI trials, there were still reduction of more than 50% of recurrent MI over 18 months. So if you think about recurrent MIs,
can still have recurrent MIs. And if you just think about thrombolysis taking in treatment, these people can have reducing. So I think primary PCI still hold a very important role, more than 50% success rate over 18 months in terms of mortality. Right, so I think with the time strain, I think we will be moving to our next talk. And I think Dr. Bilal Moeed just made it in time. He is a professor of cardiology and is the executive director of Punjab Institute of Cardiology. He's been a former professor and chairman cardiology department of King Edward Medical College and University, and he's the secretary general of Pakistan Cardiac Society. Thank you very much for coming. Assalamu alaikum. It's great to be back home, and it's an honor to be once again over here with friends and colleagues. Primary PCI, as Asif has just talked to you about, is something that is actually something I've been there for a long time. And there's a need to move forward and understand how it works. What I'm going to try to do is tell you things that you need to understand, and from there we move forward. I have nothing relevant to disclose regarding this presentation. My only idea behind this presentation are these 2 points. My simple request is that a lot of information is floating around, which if used in a wrong way can cause a lot of damage. We must make an effort to protect our society and help by giving the correct information. And with that, we start with a bit of music and see how things move forward for us. You see, life starts with music, and if you want to continue, it has to be with it. So when we talk about this whole thing, luckily Asif shared his slides with me, so his last slide I know was time is muscle. But is that all? Is that all that you can think of? That if you are able to poke quickly in, we'll be able to make a difference. We are a bit of a country with a lot of financial problems. And actually, if you look at it carefully, time is not just muscle. Time is also money. Now you have to understand what I'm trying to get to. You have to understand the simple fact that there is a thing called health economics. अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि सेहत के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उससे सारी चीजें आगे चलती हैं, तो बात हर रोज जिस वक्त एक मरीज अस्पताल में रहता है तो उसका एक फिक्स्ड खर्चा कोई ना कोई करता है। वो खर्चा या सरकार करती है, लाइक न्यू हॉस्पिटल, like so many government hospitals, या वो खर्चा इंसान खुद करता। जिस वक्त मैं जोर में था और अब PIC में हूँ, एक सिंपल एनालिसिस इस वक्त ये है कि अगर आप सिर्फ अपनी तनख्वाहें अपनी यूटिलिटी बिल्स को लें और उसको तकसीम करें अपने रोजमर्रा के दिनों से और बेड डिस्टेंस से, तो आज मेयो अस्पताल का एक बेड के ऊपर हमारी सरकार तकरीबन 10,000 रुपये रोज के खर्च कर रही है। ये फिगर है हर अस्पताल का जो हम खर्च करते हैं बेसिक बेड्स के ऊपर। इमरजेंसी के बेड्स के ऊपर खर्चा ज़्यादा है, और जिस वक्त हम लोग प्राइमरी PCI की तरफ चलते हैं तो हम ये खर्चा कम करना शुरू करते हैं। ये कैसे खर्चा कम करते हैं? सिंपल फैक्ट, एक शख्स आता है अस्पताल में 2 दिन रहता है और एक शख्स आता है पुरानी कन्वेंशन के मुताबिक 6 से 7 दिन रहता है। सो अगर आप 2 दिन के अंदर उस शख्स को डिस्चार्ज करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपने तकरीबन 30,000 रुपये खर्च किए थे, और अगर आपने 6 दिन उसको खर्चा रखा है वहाँ पे तो आपका खर्चा लाख रुपया होगा। फिर आप सरकार के पास रोते हुए जाएंगे, देखिए हमारे बेड्स थोड़े हैं, हमें बेड्स को 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है।
So primary PCI actually helps you to save the heart muscle, and it also helps you to cut down on the cost of the treatment. प्राइमरी PCI का जो प्रोग्राम PIC में इंट्रोड्यूस किया गया इन दोनों वजहों के बिहार में रख के किया गया। और जब हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज थी तो हमने 24/7 TCD शुरू किया कि जो रात के 15 मरीज आते हैं उनमें से कम आधे मरीज 10 एक मरीज हम लोग एंजियोप्लास्टी करके वो फारे करते हैं। और एक खर्चे को आप लोग ना भूला करें, वो जो खर्चा उसके खानदान का होता है वो निकलता है, काम छोड़ देता है, बाप बीमार है, भाई बीमार है, किसी ने स्कूल में पढ़ाने जाना है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ पे सारा कुछ हो गया। सो ऑल ऑफ दिस एक्सपेंस गेट्स टुगेदर। हमारे यहाँ वो वाली फैसिलिटीज नहीं है कि हम लोग मरीज को अस्पताल में डालें और वलैत की तरह कहेंगे कि ठीक है उनका इलाज होता है। हमारे यहाँ हमारे खानदान वालों का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी होना ठीक नहीं होते, बंदे के बच्चे नहीं होते। सो वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक शख्स जो आपके साथ वहाँ पे लगता है, अगर आपका वो दिहाड़ीदार भाई भी है तो उसका 2000 रुपये रोज का खर्चा हो रहा है उसकी, और आप खुद जो काम नहीं कर पा रहे उसका प्रॉब्लम हो रही है। एंड दिस लीड्स टू लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कॉस्ट रिडक्शन। ये सारे पैसे इस कॉम के पैसे हैं और हमने इनको किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट आउट करना है। एंड दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन डू इट। अच्छा, आप लोगों का क्या ख्याल है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी PCI? When we talk about primary PCI, you always think of some cost going behind it. And normally when I ask someone, these are the three costs everyone thinks about. It's the cost of the hospital, human resource, डॉक्टर्स का खर्चा, नर्सेस का खर्चा, आप कहते हैं कि उस अस्पताल की बाकी चीज़ों का खर्चा, और फिर ज़ाहिर है डिस्पोजेबल का खर्चा। एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है। प्राइमरी PCI के खर्चे यहाँ से शुरू होते हैं। वो जो ACS के साथ जिस वक्त पेशेंट आता है उसकी बेसिक केयर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का जो खर्चा है वो आपने अदा करना है। उसके बाद फिर उसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी तो करनी है, सीधा एंजियोप्लास्टी तो नहीं कर देंगे ना। सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एंजियोग्राफी टू बी डन आल्सो, देन द कॉस्ट ऑफ एंजियोप्लास्टी टू बी डन। और फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। यू हैव टू गो इन फॉर रिहेबिलिटेशन। उस शख्स को वापस इस माशरे में एक काबिल इंसान की तरह वापस लेके आना है। उसके लिए हो सकता है कि उसका अगर उसका मायोकार्डियम बहुत डैमेज हो गया तो उसको कैपेबिलिटी देती है कि वो फिर से चल फिर सके। और जाहिर है रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट। रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट में जो आज हमारी मेडिकल कम्युनिटी लैक करती है वो लोगों को समझाने में लैक करती है कि भी करना चाहिए। यार देखो, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो दो चीज़ें जो आपके बस में नहीं है, आपको अगर होनी है तो हो, और इनके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल का तोहफा आना है तो वो भी आ जाएगा। अब रह गया एक तोहफा जो हम खुद बाजार से खरीद के लाते हैं, तंबाकू नोशी। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो सिगार हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे आजकल का वो नया पेपर हो, वो कोई बला भी हो, क्योंकि उसमें निकोटीन है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने मरीज की सेहत चाहते हैं, आज प्रोफेसर साकिब साहब भी इधर बैठे हुए हैं, एक अजीब सा खंड शुरू किया हुआ इन लोगों ने मिलकर। ये सिगरेट्स को गिनते हैं साल के हिसाब से, 1 पैक ईयर, और खुदा के वास्ते आपने अगले की बीमारी बढ़ा के बतानी है। 1 पैक ईयर का मतलब ये है, कोई बात नहीं, एक पैक ज़्यादा तो नहीं है, जरा इसको हिसाब लगाओ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग 600 cigarettes per month. This is the problem the person has. ये जिसने भी ये चीज़ आजाद की थी, ये इसलिए की थी कि बुराई को कम करके दिखाने के लिए। आज अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये चीज़ $100 की आती है और अब ये $120 की हो गई, तो आपको कैसे $20 महंगी हुई है। जबकि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आज ये चीज़ इतने की है और आज इसकी कीमत में $5000 का इजाफा हो गया है, तो आपको बेड़ा आता है, ये मुसीबत पड़ गई। हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर और इन चीज़ों के बारे में बात करते वक्त ये लाजमी है कि हम बुराई को बढ़ा के दिखाएं ताकि हम लोग उससे बाज आए। बतौर हेल्थ प्रोवाइडर्स हमारा फर्ज है कि हम मरीजों को इस बारे में बार
बताएं और उसकी प्रॉब्लम का वजूहात बताएं। आज आप बहुत सारे डॉक्टरों से अगर ये पूछा जाए और मरीज सिर्फ इस आपसे डिबेट में पहुंचे मैं क्यों सिगरेट छोड़ूं, तो आप लोग उसका सही जवाब नहीं दे पाते। These are the facts that you need to know and address yourself. और फिर प्राइमरी PCI वहाँ पे खत्म नहीं होती। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आज का जो ये सरकार की सेहत सहूलत प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उन सबसे बहुत दफ़ा ये बात आती है सुनने में कि जनाब एंजियोप्लास्टी तो की थी, मरीज को 7 दिन की दवाई देके भेजा था और 7 दिन के बाद वो स्टेंट को बंद करके ले आया क्योंकि उसने कहा था सिर्फ 7 दिन दवाई खानी, आगे नहीं खानी। ये एंजियोप्लास्टी इज फॉर लाइफ, स्टेंट फॉर लाइफ एक प्रोग्राम है जो चलता है और उसकी लॉजिक ये है कि आपने अब शख्स ने ACS के तहत 1 साल के लिए और बाकी चीज़ों के तहत शायद सारी उम्र के लिए दवाई पे रहना है। उसकी कॉस्टिंग को आपने देखना है और अगर इस सब चीज़ को आप देखो, एक SSS आपने सुना होगा सिस्टम, गाड़ियों के लिए सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स, तो यही वो चीज़ है, दिस ऑल इज सपोर्टेड बाय द सिस्टम, सेल्फ एंड द सोसाइटी अराउंड योर फैमिली। आज पंजाब कार्डियोलॉजी में जो मरीज दाखिल होते हैं वो तकरीबन 1000-2000 रुपए की दवाई, बहुत ज़्यादा अगर महंगी दवाई हो 2000 रुपए में उनका काम हो जाता है, डायबिटीज़ की दवाई के साथ आ जाती है, बिकॉज nearly 30 to 40% पेशेंट्स आर ऑफ कार्डियक ओरिजिन आर डायबिटिक्स। सो अगर आप 2000 रुपए को सोचें और इसको पूरे साल के ऊपर ट्रांसलेट करें तो 24,000 रुपये बनते हैं और 5 साल में 1.25 लाख रुपए के बनते हैं। जनाब आपकी एक एंजियोप्लास्टी के ऊपर जो खर्चा है वो बेसिक सिर्फ डिस्पोजेबल्स का 1 लाख रुपया है और बाकी सारी चीज़ें कॉस्ट अगर आप इकट्ठी करना शुरू कर दें तो बात कहाँ जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अनलेस एंड अनटिल यू गेट योर हेल्थ इकोनॉमिक्स करेक्टेड, इट डज नॉट वर्क। Another thing is the human resource. Human resource is not just a doctor or a nurse or a technician and a paramedical staff उसने प्रेशर देना, उसने ये करना, उसने वो करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस ह्यूमन रिसोर्स में जो सबसे ज़्यादा अहम जो शख्स आपको आपकी एंजियोप्लास्टियाँ करवाने में हेल्प करता है वो आपका फार्मासिस्ट है। वो शख्स जो इस बारे में इंश्योर करता है कि आपके पास सारे साइजेस चीज़ें सामान अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड आजकल आपके पास हेपरिन की शॉर्टफॉल पूरे मुल्क में, कैसे काम करोगे? वो फार्मासिस्ट का काम था कि चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट करना, क्लेम करना, मैनेज करना। आप लोग टेक्नीशियंस हैं, यू आर गोइंग टू अदर थिंग्स, यू डोंट रिमेंबर दीज वेरी बेसिक थिंग्स दैट आर हिटिंग यू। एंड ऑफ कोर्स द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू यू, you will never be able to get this program. They have to be convinced to the fact कि अगर आपके बाप को कोई प्रॉब्लम हो गई ना और ये फैसिलिटी ना हुई तो फिर रोते रहना बाद में सारी उम्र। As simple as that. और बाप से भी ज़्यादा शायद माँ, क्योंकि बाप तो कई लोगों के पहले ही अल्लाह खैर से रहा। But these are the facts. Supply line. हर लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट के अंदर सप्लाई लाइन की आर्मी ने बहुत क्लियर कर दिखाया है। सप्लाई लाइन नहीं है, वो कहते हैं ट्रेन के इंजन को मारो, ट्रेन भी खड़ी हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द फंड्स आर कमिंग इन एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफ देयर इज नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर रन, रेस्ट एश्योर्ड योर सिस्टम विल कोलैप्स। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। I just share a few statistics of last 4 months of Punjab cardiology since we are program over. Emergencies are about 26,000 coming in. This is like 1,000 patients coming every day. It's more than the outpatient. Angiographies was 17, 16, this is for August, and at that time our angioplasty and everything was available. And these are the figures from where we have started moving on. Angioplasty and the primary PCI that you want to talk about, in September it was 201. In October the number slightly improved to 215. And in November it's now 229. And hopefully this year but again it's going to go up. So this basically means that we are doing at least 8 in our emergency cath labs
And as far as other cath labs are concerned, there are more. So we do about 10 pure primary PCIs, and by pure primary PCIs we mean that who have been coming in within 6 hours of the symptoms. This you must have heard 1,000 times in a medical student. I see what mind knows. But have you ever realized that mind perceives only to what it is exposed? Thus no shortcut to experience. And the secret of excellence, as Mahmood Sahab knows, is it is never being satisfied, and we always keep striving for the best and the best possible. I will now share a few cases with you, which also somewhat reflect on the issues that have to be faced at time of primary ACS, and what is the potential of problems. This is the patient. Read about it. 47, sinus 80, BP 70-50, echo say 75%. EF trying to build this BP to proceed for PCI. It took us about 4 hours to do this job. Finally, when we took him in, we finished the job in 10 minutes. What was the delay caused by? The second patient, घबराहट हो रही थी, जाके बीपी चेक करवाया, और फिर हमारे पास जब आता है तो there is no B wave. What is happening? The information that is floating around with you in your WhatsApp channels. And this one, a strong family history, presented with nausea and tarry stools. Any idea what is happening? First, the patient. Patient had used 5 sublingual anti-6. This was a message received on WhatsApp. कि ये हो रहा है तो ये करना. Not knowing कि वो दर्द को तो शायद फर्क डालेगा नहीं डालेगा, बीपी जरूर ड्रॉप कर देगा. On top of metoprolol, 100 milligrams twice daily, क्योंकि घबराहट हो रही थी, तो उसने एथिनोल भी लेनी शुरू कर दी. And now the patient is in total problem. So you have to actually get out the whole problem. And this one, 600 milligrams जिसे सुना था कि डिस्पिन की 2 गोलियां ले लेनी चाहिए जब सीने में दर्द हो, क्योंकि खानदान में तकलीफ है, तो उसने ये दवाई दे दी. And there is the problem. CLD is the underlying problem, varices, and the patient has resulted in other problems. So you'll have to face all of these difficulties when you're doing your primary PCIs, and within 5 minutes you need to make sure that you have the adequate, correct history. Other problems, of course, are like sublingual captopril, use of proton pump inhibitors, unguarded. लेटा हुआ भी है, फिर भी मुँह में पानी डाल रहे हो. ग्लव्स हम लोग नहीं पहनना पसंद करते, जूते हम लोग प्रॉपर होते नहीं हैं. Improper information, of course, is there. By the way, this is how you normally transfer your patients. इस तरह से उठा के लेके आ रहे हैं. Thank you to 112 that they have made a big effort in trying to get this whole thing sorted out. This someone may actually recall who this gentleman is, but anyway. Now I'd like to make a few things. We have got some friends over here. What is the problem? Time is up so far. This is the quackery that we have in shifting patients. अगर आप गौर से इसके सामने देखें, तो मैं इस आदमी की बात नहीं कर रहा. इन एम्बुलेंसेस के सामने वो जो लगे हुए ना, जो आज ट्रैफिक पुलिस ने बैन कर दिए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. This is the quackery, how we are shifting in various ambulances, causing accidents on the road, creating more patients. हाँ, वो जो ड्राइवर है, उसके बारे में तो बहस है. These are those expensive ambulances abroad. इनके सामने आपको नजर नहीं आते. आज बहुत सारी आपकी जेलों सारी उनके सामने वो चीजें नजर नहीं आती. And by the way, this lady that we see is a mother of 6 children, and after completing her family, getting them into their colleges, then she decided to move on and get into this paramedical services. I interviewed her, and that is how I know her history. अपनी एम्बुलेंस का बैकडोर देखो ना, इनकी एम्बुलेंस का बैकडोर देखो. Look at the difference, how comfortable and uncomfortable it is. So sir, you need to look into this fact that you need to improve your ambulances, and we need to have these swing doors rather than that kind of a door. On top of it, these ambulances do not have lights over there. So at night, we have problems. Look at the headroom. I can stand over there because I've been involved in shifting of these patients a couple of times. In fact, last or 3 weeks back, I did the same thing over there. And I knew what a big problem it was. In fact, हमारी जो गाड़ी 4 पहियों वाली है, वो रहती जो गाड़ियाँ थी, उनके 6 पहिए थे. So as a result, there was
softer to ride on. हमारी गाड़ियों के साइड्स पे शीशे खुले हुए हैं, हर लोग अंदर को झांक के देख रहा होता है ये क्या हो रहा है. This is not the thing. Patient privacy is essential. आप बड़े आराम से इन सारे एरियाज को बंद कर सकते हैं, and you can provide them with a better thing. These ambulances exist in the world. They are not expensive, and the way we get our ambulances made, I'm sure the LifeCare people can easily make these ambulances. Look, they even have a special locker over there, ताकि अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज रिकवर कर ले, तो उसको लाके वो सेफ करके रख के जा सकते हैं. And also notice that they have seat belts, so that when you're sitting, you who is helping the patient is not jumping around. And these are the various things that all of them carry, various places, because ambulance will reach any place. वो ACS की उनका leather bag है, उनके पास एक और बैग है जो war victim इंजरी की है, हर चीज का leather bag वो पीछे रखे हुए. The chargers are inside. ECG machine and everything gets charged inside. The cars, no equipment goes out for recharge. We need to look into this fact, look at the way our equipment is kept. So you need to access and see all of this stuff. In fact, ये अगर आपको defibrillated होना चाहिए. I looked into this whole fact that AED का जो मसला है उसकी जो बैटरी होती है वो 50 शॉक्स दे सकती है and it has a life of 2 years. आप सबको मालूम है कि हमारे बहुत अजीज दोस्त के भाई का एक मेजर हेल्थ क्लब में एक्सीडेंट हुआ and we lost him. And over there when this DF was checked, it was not performing. So, and then the family has tried to do things about it, but whatever can be done. Of course, our trolleys have the same facility, but notice that their trolleys also have an oxygen cylinder behind it, how it is carried. They have these floatable valves where your trolley can't reach, you can bring in the patient. Seats have a lot of stuff under it. You have a wireless to reach out and talk to the doctors over there. These are the things that we need. The navigation system tells you कि आप कहाँ से फंस रहे हो, कहाँ से निकल सकते हैं. And then the hospitals have proper separate parking for these ambulances. These ambulances do not go into a general way area. So those who are planning these things and your areas, you need to look into these facts. And this is a small idea that our wheelchairs need to be corrected. This is a appropriate wheelchair. This wheelchair is not self-driven. It has its oxygen cylinders and it has its own IV drip set also. Something that needs to be improved on. And with that, I'll say thank you and I hope for primary peace that if there are any questions, I've taken some extra time to answer questions. Thank you. Thank you very much for excellent talk and telling us the ground realities, the challenges we're going to face. And I think the core team which will be helping with primary PCI in future, without them which we cannot do this work, will be our emergency services. And I have honor to invite Dr. Rizwan Naseem, who is our Director General of Emergency Services Punjab. Please come on stage for your talk. Thank you very much. Thank you. It's good to be back in King Albert Medical University, where I graduated in 1992. And that's where we started this work. 1991 was the first study that we carried out, and there were 95% chances that in case of an accident or emergency, you will not get an ambulance in time. And when we started talking about this, everybody said, Dr. Saab, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है. तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं बन सकता. So I'm just going to share the journey that we started from this Mayo Hospital emergency department, and which was the largest emergency, purpose-built emergency department that was built in the 1980s after the blasts were taking place. And I'm just going to share the journey that we went through. It's just going to be a 2-minute thing so that it will make it easier to what we've been able to achieve since that time, that 95% chances were that you will
not get an ambulance. It was almost a mission impossible from the training to, yeah. Yeah. So can you run the video? What is that? Acha, chale. We're running a video. I'm just going to try and tell you what. And our mission is not just to actually provide pre-hospital emergency care. We are now working for prevention of emergencies, development of safer communities. Ultimately, by next year, we are going to have emergency response team, inshallah, in every village of Punjab. Every village of Punjab. And we're going to be working for a major effort would be towards prevention of emergencies, towards developing resilient, socially responsible, healthy, resilient, safer communities. Now, what we're doing right now is, well, we're having a problem with feeding freedom, but we're running rescue cardiac ambulances. Now, there's one cardiac ambulance, and we did a comparative study. Bilal Saab ki main presentation dekh raha tha, wo interesting thing. I think hospital ka tha ya ambulance service pe thi. There's an extensive process which goes unto this. कि आप खड़े होकर एम्बुलेंस में जा सकते हैं, वो स्टेबल ज़्यादा है या दूसरे ज़्यादा, इसमें स्टेबिलिटी टेस्ट सच होते हैं. Then you do an extensive comparison whether it's feasible to have a basic life support ambulance, or you want to have an advanced cardiac life support ambulance. Now you look at your population density, you need to look at overall population, you need to look at overall benefits, and then you need to look at if you're going to be going for an advanced cardiac life support ambulance or a basic BLS ambulance. So you need to look at their cost, benefit and everything else analysis which has to be extensively undertaken when you're actually planning such a project. So this is obviously meant for this, and at one time we were also ready to transfer the ECG from the ambulance to the hospital. So if the hospital is ready to do that, we're even ready to do it right now, and we will be actually able to transfer all of those information to that. But then the hospitals have to be prepared. So we've established a component which never existed, but then obviously once they get to the hospital, they need to get the same level of attention and the care and the time period. When the earthquake took place, obviously we didn't have any system. Just going to run a when we started this work, 91, 92, there was this, so then when we started this work in 2004, so that was just from an ambulance service in Lahore. Today we are the first service, it's not just gone to the Tehsil level now in Punjab, we are helping Khyber Pakhtunkhwa, we are helping now Sindh and Balochistan, so that the people can be provided with the right to basic, provided emergency care. Do you think कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आपका ख्याल है आपको इमरजेंसी में मदद मिलना क्या है, राइट है या नहीं है? राइट है, और उसमें the provision to timely emergency care was considered as a luxury over here. When we talked about this, कहा जी नहीं ये तो नहीं हो सकता या नहीं है, आपके सड़क पे पर पड़े हुए लोग जो थे मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से उनको कोई हाथ लगाते हुए घबराता था. So that was the on-ground situation. Sadly, but and then this was the challenge. We did it. जी इसको प्ले कर देंगे प्लीज. अब आप वैसे ही लगा दें.
We're just going to quickly run through, I think, so establishment of a fire service through hazmat, this was a challenge. फिर फ्लड में obviously कोई response mechanism नहीं था, तो we ended up establishing the disaster response force. This present flood, we just evacuated 80,000 people, and just because of timely warning, we were able to cut down the mortality in Punjab. और फिर सिंध को जिस वक्त जरूरत पड़ी बाद में distribution के लिए, so we had to also do that. Urban search and rescue after the earthquake, we saw what a state of helplessness was. एक साल बाद we established the first team. And then the important thing was to train them at international standard. We became the first search and rescue team to get UN certification in South Asia. So this was something which was an honor for Pakistan. 2019 October, we were able to get the UN certification, the first team to get certification. Now the biggest challenge that we came as we went from the districts and the main cities to the tehsils. Now this is the big challenge that we have. And this is going to be a challenge for everyone. Does everybody want to come to BIC? How do we have the referral mechanism which has to be very robust? So, if you have a patient who's going to be picked up and taken to a tehsil hospital, and if the tehsil hospital beds are there, and they're all lying vacant, and every patient is going to be referred to a teaching hospital, then we really need to see what those beds are doing. And if we need to have the available specialties at the district level, or we're going to be shifting every patient to Lahore, PIC or MIC, so those are that's the real challenge. So how well prepared those hospitals are, and we are able to get this intervention from PIC to that district headquarters hospital so that we don't have to refer the patient and they can get the immediate treatment over there. I think that's something which is very important, and that's the real challenge for us now. Because once we've gone to the tehsil level, everybody wants to वहाँ से patient को लेके हमें अब लेके जाए अब specialized healthcare hospital. Now some of those when you are in the south are about 2 hours away, 3 hours away, so it's not easy. And if every patient wants to be shifted, then it's always a challenge. Within the city, we had the challenge of establishing the motorbike rescue service. And because on London and Istanbul model we established this, today it has responded to over 1.1 million emergencies with an average response rate 4 minutes in the cities, which is an achievement even internationally. This is the true change that we are now looking at. To establish socially responsible, healthy, safe and resilient communities. So we are establishing emergency response teams in every council which not only work for emergency response, they are now, so all of your students I think should go at least to a Pakistan Lifesaver, Pak Lifesaver app, at least get the cardiac basic life support training on that. And if you want to go to a level 2, you can get online training as a rescue cadet corps. And once you've got that training, you can register as an emergency response team member. So that's now available within Punjab, and that's where I think all the people outside Pakistan who want to contribute, we can get into those programs and make them more and more preventive oriented so that we can actually work for betterment of the communities. That's the true change that we're now looking at. If you look at the overall data, you see the first column, go below, that's in this over here, we've responded to over 10.7 million emergencies, and since our start in 2000. And so far we've rescued over 11.9 million victims with an average response time of 8 minutes. So that's something which from where they said it can't be done, today Allah ka shukr hai ke they, anybody who calls the emergency number which has been given by the Pakistan Telecommunication Authority today in Pakistan is 1122. So you dial that number and we have an EMDS system which everything is recorded from the call to actually, so there's no false figuring actually. It's every vehicle is tracked. So that's the kind of system now that we're talking about. So that's what we do. If you look at the annual data, so that's almost just for this year, up till now we've responded to over 1.4 million emergencies and we've rescued over 1.6 million victims so far. Now just looking at the other data that we do, we also do a trauma registry. And if you look at the overall global burden of disease, the road traffic crashes are becoming a big problem. Today, we manage almost 1,000 road traffic crashes every day. And that's every 1.5 minutes is almost going to be a road traffic crash, which is going to be a huge problem.
So we need to focus on prevention. So we're looking at evidence-based data to actually focus on prevention. So this is the strokes, about 4,000, and then did CPR 9,635, and heart problem patients were 29,000. Just from the year 2021, this was the data. Integration of stroke centers with Rescue 112 Lahore. So I'm going to end with this. This is the mechanism that we've established. So if there is a patient stroke, they have a triage at the call level. So the call center can actually do the triage. It goes to the dispatch vehicle, the ambulance at site, and a fast stroke patient assessment. From there, the stroke suspected patient can be taken to a facility if they are willing and if they are ready to support this. So this is a system that is now there, and the pre-hospital care treatment can be done over there, and ultimately transportation of the patient to the dedicated stroke center. So system is there, we're ready to do it. I think the next step has to be taken by the hospital, and if they're willing and if they've declared some of the centers that have the facility, and we can shift. And it should not be just restricted to Lahore, because Punjab happens to be a small province of 120 million population. So when you're going to be catering to such a large population, I think we need to have multiple centers. It's not just one or two centers that can cater to all of this load in over Punjab. So that's something which we really need to focus on. So with that, thank you. मैं ये कहना चलूँ कि सफ़र का आगाज़ अगर मैं यहाँ से कहीं से ना करता 91 के अंदर जो पहली स्टडी थी, तो ये शायद सिस्टम ना बनता. सो आई थिंक उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर किस तरह बना सकता है एक सिस्टम. अल्लाह का शुक्र है कि वी वर एबल टू एस्टैब्लिश दिस सिस्टम, एंड बट इट वाज ऑल थैंक्स टू द वर्क दैट वी डिड फ्रॉम हियर. सो इट्स ऑल. अच्छा, जस्ट वांट टू ओके, जस्ट 1 minute. Emergency service known as Rescue 1122. It started as a pilot project in 2004 from the historic city of Lahore. Rescue 1122 gradually developed into a model of integrated emergency ambulance, rescue and fire services, and community emergency response teams for the other provinces of Pakistan and South Asia. After success of Rescue 1122 in Lahore, this emergency service has been expanded to all districts of Punjab province and other provinces of Pakistan with a population of over 220 million. Up till now, Rescue 1122 has provided emergency services to over 10 million victims of different emergencies without discrimination on just one call on the emergency number 1122. To provide better emergency services in congested urban areas with traffic jam, Rescue 1122 started motorbike rescue service in 9 divisional headquarters of Punjab, which has responded to thousands of emergency calls with an average response time of 4 minutes. Besides that, patient transfer service shifted over 1 million of critical patients from primary healthcare facilities to specialized healthcare hospitals. The first modern fire and rescue service started in 2007, and the service has so far saved losses worth over rupees 500 million by timely emergency response and professional firefighting in around 200,000 fire emergencies. Water rescue service provided services to thousands of drowning victims, and these teams also rescued many people during all floods from 2010 onwards. Rescue 1122 is not only rescuing humans, but has also rescued thousands of animals in different emergencies. Rescue Service also established community emergency response teams in all union councils of Punjab to improve emergency preparedness at local level, and is also conducting CPR training to the masses to have a first aid kit in every home. Furthermore, in order to make the youth socially responsible, Rescue Cadet Corps training has been started for students of colleges and universities. During COVID-19 pandemic, Rescue Service provided frontline services and shipped thousands of corona patients to hospitals and quarantine centers, and also carried out dignified burials of corona dead bodies when their loved ones were hesitant to go near the dead bodies of
In this life-saving mission, a number of rescuers sacrificed their lives in the line of duty in order to ensure sustainable human resource development. Emergency services in Pakistan, a purpose-built emergency services academy, has been established in centrally located city of Lahore. This academy is training emergency services of all provinces of Pakistan. Every year, Emergency Services Academy organizes National Rescue Challenge and National Volunteer Community Emergency Response Teams Challenge to enhance the capacity of emergency personnel and rescue scouts. The need for a disaster emergency response team was felt after the catastrophic earthquake of 2005 in Pakistan, which resulted in the establishment of the first disaster emergency response team in 2006. And after the years of continuous struggle, the Pakistan Rescue Team of the Emergency Services Academy was honored to become the first United Nations certified search and rescue team in South Asia in 2019, which is a great honor for Pakistan. It is stated in the Holy Quran that whoever saved one life, it is as if he saved the whole humanity. Therefore, Rescue 1122 is committed to saving lives, changing minds, and promoting safety. Long live Rescue 1122. Long live Pakistan. Apologize for this, this computer. Please. Thank you very much for the opportunity. So my name is Dr. Rahman Munir. I'm an endocrinologist, trained in UK but a proud Californian. So a comment and a brief question. The comment would be that I'm a direct witness of the quality of services that 112 provides. I've been on the motorway twice, involved in a basic life support maneuver that I had to do for an accident. And on both occasions, your team was there within 6 minutes. So that's good. And the journey that you've traveled and the progress that you've made just shows that impossible is nothing. So first of all, a heartfelt tribute to you and your services, and we are really proud of you. You're a national hero. I wish we had people more like yourselves, other than just comparing ambulances, would actually step forward and do something. And you were very rightly thrown the ball in the hospital's court. Let's see what they come up with. That's one. The question would be, obviously this journey wouldn't have been easy. There's nothing easy in this country, perhaps apart from comparing ambulances. But what I would like to say is for people like ourselves and the younger generation sitting in this hall, what sort of obstacles you met, what helped you overcome that? Go ahead. I think I'll write a book once I retire. I cannot narrate all of those things right now, but I'll definitely write a book when I retire. I think starting from when I was an assistant professor over here in King Edwards, and I wrote and I resigned, and I wrote in my resignation, I hereby resign in the national interest for the development of emergency services in Pakistan. They thought I was mad and crazy. My own family thought I was mad and crazy. Because leaving a very good practice, and worked and done my fellowship in one of the best centers, knee centers in the world, I had come back and had a very good practice, and leaving all that was not easy. Everybody thought I was mad and crazy. But we started this journey just from, and we did the national reforms in 2001, and had those been implemented, probably half of the lives would have been saved in the earthquake. It's a very frustrating thing when you want to establish a system, and that too in a developing country. You know, what's the difference between a developing country? I've also served as the Secretary General for Red Cross Pakistan now, and also represented at the UN Humanitarian Forum, so twice in the General Assembly and then at the UN Humanitarian Forum for 3 years when we had to go and defend our case for UN certification and go through the process. When you see the 190 countries, I think the basic difference between a developing and a developed country is the basic governance. Those who have been able to prove those systems, you do move to a performance accountability system, whether it's the hospitals, whether it's the pre-hospital emergency care system, whether it's any of the system. Once you move to that system, you automatically change and reform. So there are a couple of basic principles. I will not go into those details right now,
but it certainly were a very difficult journey. Imagine when we started the project in 2004 as a doctor. Doctor, ये करेगा? नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता. मैनेजमेंट का को क्या पता है? और वो भी एक प्री हॉस्पिटल का पूरा निजाम बनाना. डॉक्टर साहब ये अमेरिका और यूरोप नहीं है. मैं भी कभी कभार सोचता था शायद मैं गलत हूँ. पता नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिन बात है. अल्लाह का शुक्र है कि यहीं पे बनाया और इससे आज 1 करोड़ 11 लाख. So it was not an easy journey. ट्रेनिंग नहीं थी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की. पहली बार भी स्टार्ट करना ट्रेनिंग. एम्बुलेंसेस की लोकल डिजाइनिंग बड़ी जरूरत थी. बाहर से पुरानी एम्बुलेंसेस भेजते थे तो 2 लाख चली गई जिसके ना पार्ट्स लगते थे ना कुछ और होता था. So you know there were so many challenges and then taking on search and rescue ambulance. So it's all can be done. मैं आप सबसे ये सिर्फ कहना चाहता हूँ जो आप फ्यूचर हो. It all seemed impossible. I was sitting like you when we started this 91-92. पहली स्टडी थी मेयो हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 95% चांसेस आर के हाथ से इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं मिलेगी. That's where we took a start. But then you have to do a sacrifice. And it's a lot of sacrifice. It demands constant frustration. It's very difficult to change and reform something. But my biggest satisfaction was जब कल सुबह कोई बंदा आता था और कहता था थैंक यू. आज अगर मेरे वालिद साहब बचे हैं या मेरा शौहर बचा है या मेरा बेटा बचा है, थैंक्स टू रेस्क्यू 122. Then मैं सारी की सारी परेशानियां भूल जाता था. Then came the day. Thank you all. So I think this is my message to all. Nothing is impossible. We can improve things in Pakistan. Thank you. Jazakallah, thank you, Rizwan. And inshallah, I think with all the efforts the emergency team are doing, inshallah, we will achieve primary PCI in Pakistan, inshallah. So I think we had 3 wonderful talks, including myself. And I think we got very an expert panelists, and I would like to take some comments from panelists, and I think next half an hour we're going to do general discussion about all the 3 talks we have done and how we can make things better in Pakistan and how we're going to achieve this. So even I want to start maybe one question. I think this is for Dr. Bilal Muhyiddin. What I have seen from your statistics for people you're doing already primary PCI in Punjab Institute of Cardiology, and it's a huge number. And in spite of we don't have a proper primary PCI set up in terms of people who picked up from community, these people are self-presented to AE, I believe. So I think, do you think people in Pakistan have that awareness, or they can naturally go for seeking medical help more urgently rather than just calling ambulance because we didn't have that system for long? Thank you for asking. Pehli cheez to ye hai ki you have to understand what the condition has been. And as Ms. Bar so nicely pointed out, that 95% chance was that we will not get it ambulance. And in fact, probably it's not 95%, he's being very kind to the community. It was probably 100% we will not get an ambulance. And even if the ambulance that we may get, it would be something like a transport vehicle that you see, like an ED vehicle, etc. They're just transport vehicles. They're not equipped to handle emergencies. So, this is one fact. Another fact, as far as the hall is concerned, is that, for example, Mayo Hospital was initially built outside the hall, but now it is going to be inside, deep into the hall. So is PIC, so is the Jinnah Hospital, so is the Northern Hospital. So all these hospitals are now surrounded by a lot of community. Another thing, credit I would love to give to my general physicians friends over there. उनको जब एक मरीज आता है ना, उनके पास वो सिर्फ 2 बातें बोल रहा होता है कि मेरे सीने में दर्द हो रही है, सांस चला रहा है, या सीना आ रहा है. वो थोड़ी सा नब्ज देख के ना शायद PCD करे, लेकिन वो कहते हैं कि इसको अस्पताल में कर. Of course, he has no idea behind it. वो उसको अपने वहाँ पर mortality नहीं करना चाहता. He wants that patient out of his clinic as early as possible. लेकिन उसके साथ ये भी कर देता है ना, अपने 2 गोले में स्पीड की भी खिला देता है. And we have been going out and discussing this whole problem and taking the community of general physicians with us. So yes, families by tradition खुद अपना फैमिली नंबर उठाते और वो अस्पताल की तरफ रश करते हैं. मगर अब एक सोशल स्ट्रेटा हमारा डेवलप होना शुरू हो गया जिसको 112 की अफादियत का पता है. और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कम्युनिटी डेवलप हो गई है जिसमें उनके बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे सारे विलायत में होते हैं.
तो विराट सिंह जी डॉक्टर को फ़ोन में कहते हैं कि मेरा बेटा है कार्डियोलॉजिस्ट से सुन लेता उसको क्या पता वो आपके साथ मेरे क्या हो रहा है तो ग्राउंड रियलिटीज़ का काम बता नहीं सकते बट एनी डिफेंस का इलाका है, ये सारा इलाका है, ये एक इलाका है जहाँ पे सिर्फ माँ बाप रहते हैं और वहाँ पर बच्चे नहीं होते, शायद उनको दो चार माहौल होते हैं जो तो वहाँ पर ये परमानेंट खास तौर पर एकदम आसन आती है उनकी अस्पताल है वहाँ पर लेके पहुँच जाती है बट मेजॉरिटी जितना भी कुछ हो है वो सारा का सारा आपके फैमिली मेम्बर्स आज खाते हैं चीज़ को और अस्पताल लेके जाते हैं इवन बहुत सारे सीरियस इंजरीज वाले पेशेंट्स लेके आते हैं बट हैविंग सेड दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू 112 बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज विजिटिंग आई वाज इन सर्विसेज हॉस्पिटल फ्यू इयर्स बैक और वहाँ पर मुझे किसी खास तौर पर सर्जन ने कहा था कि ये जो पेशेंट आया है उसके अंदर सरिये लगे हुए थे सारे और पहले वक्तों में किसी ने इसको वैसे नहीं किया था बट 112 ने प्रॉपरली जिस तरह सरिये बाहर से काटा जाता है काट के उस तरह से नो वन ट्राइड टू पुल हिम आउट so they brought him in and then a surgery took place and that person who was not supposed to survive he survived. Similar examples हैं of such fantastic surgeries and events that have taken place in Indonesia. I remember there's one surgery that was done in Jinnah Hospital where there was a bullet in the butt of his and the patient was living. And then later on, तो उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि इस बंदे पे ऑपरेट करते हैं ऑपरेशन के दौरान मर जाता है तो कहेंगे कि डॉक्टर ने मार दिया और दी अदर हैंड अगर नहीं करते तो गोली से मरता है सो इट्स अ बिग थिंग बट ऑल ऑफ दीज गुड थिंग्स दैट वी सी टुडे द challenges that are coming up are because of 112 because now we have a team of experts or training expert people of how to transport a patient. This is something that we actually need to even teach our young medical students of how to transport a patient. And I'm sure our senior colleagues are all working on it. Thank you. I would like to take comments from Professor Priti Sattar. I think I've seen you writing a lot of notes for us, so I would like to send some comments from you and then the rest of the panel. What type of comments would you like to have from me? I think I will take any comments from you, madam. I would go back to, if you just look at different cities, we are just developing and trying to centralize all the facilities to Lahore. Even if you just go for experts, they are also centered in major centers. You just take PIC and New Hospital. No one likes to sit in New. Everyone is in an attempt to go to PIC. There is mass migration of people from other cities, though there are centers there, but we are producing experts only for Lahore, not for other centers. Basically, our policy maker, they are not taking interest. Once we have produced experts, they should be disseminated to other centers so that many centers should work in an expert way and every center should be equally equipped, should have equal experts and no one should think that they are deprived of facilities. That's my problem. I just feel like if I worked for 28 years at Mayo, I should have been given a chance to go to PIC. I should have been given a chance to go to MIC. We are not given. There is just stagnation of experts at one center and they don't exchange these people. I think there is a need of time. We should disseminate knowledge, we should disseminate experts and we should make all the centers equally effective. And that's great. Thank you very much. I think if you look at the European model, they said you should have a primary PCI state-of-art center for at least 0.5 million of population. So I think the population of Lahore, you can easily have 5-6 primary PCI center. And as you said, we should develop expertise and that all these patients will be divided and that will delay in giving the right treatment.
I would like to take comments from Dr. Tariq Azim, please. Thank you very much, Asif. Basically, I did a bit of research in 2019 about how to implement primary PCI in the law. What I found was that we had enough number of cath labs spread very nicely over various parts of Lahore. We have got enough number of properties, and we've got wonderful level 1, level 2. We've got all the components requiring a successful primary PCI project, like it was started in London in 2007, 2008. It's a complexity. Travel to various hospitals and various centers is not that, in distance-wise, it's not that far. Therefore, I think I would about that it should not be only the PIC providing primary PCI service to the board of Lahore. We've got other centers as well. And all we need is one, for example, control center or headquarters. And that control center is well linked with the ambulance services. And the ambulance services should be able to do an ECG, either WhatsApp or whatever, and get the diagnosis and take the patient to the nearest center. And you can divide primary PCI to daytime and nighttime services, nighttime centers, like it's in London. So at nighttime, there are 4 centers. Daytime, there are many centers providing primary PCI. So are we able to implement? All we need is a coordination and ownership of this project. Personally, I think like as a British Cardiac Society, it should be Pakistan Cardiac Society, which should be empowered and backed by the government and finances. And they should run this project. They should identify how many cath labs we have, for example, in Lahore, how many operators at one center we have in Lahore. Identify at night how many centers we can have. And for example, my PIC has a big cohort of doctors who can be private PCI. They can be spread and asked to do other hospitals at night time, for example, that you're on for example, private PCI, for example, in Jinnah Hospital or in New Hospital. And so that the whole of the population of Lahore can be covered. I believe we have got adequate number of cath labs, adequate number of cardiologists, and we've got resources as well. We've got health card, and it all needs a bit of coordination. This whole project, it's a music to my ears, because when we learn these services in England, the very basic questions like this, how the ambulance staff is going to implement ECG, and how they will manage. These were the questions which will actually get us at that time. I worked in Derbyshire, was first up where we did community license. That was in 1990s, and we trained the whole ambulance staff within 2 years to interpret this. But in that process, obviously, we were sending ECG or faxing ECG to our communicator, which our sister in our government, that this is studying normalization at home, and bring to the communicator. And that kind of service is quite easily manageable even here. We can not only think of Lahore, we can also think of Punjab. And it's not only primary PCI, and it will take a few years, but we have community normalizers for them, which can be easily managed. We can train the ambulance staff, they can do the ECG, WhatsApp, get the diagnosis, normalize it in a village, or even for our cities wherever they can reach. So I think we need ownership of this project by Pakistan Cardiac Society, empower Pakistan Cardiac Society, and back by finances from the government.
government is the ownership, right? Taking the ownership of this project. I think I will be the wrong thing. It should be Pakistan Garden Society, which should be the ownership of this project and should be backed by whichever government comes in power. Thank you. Just like that, as far as where is primary PCI happening? Lahore, Multan, Kashabad, Wazirabad, Rawalpindi, Islamabad, Rahim Yar Khan, Bahawalpur. All these centers are doing primary PCI. इसलिए इस बात को ना सोचिए कि पाकिस्तान में PCI जैसे सिर्फ एक खास सी चीज़ है जो PIC में लाहौर में कहाँ का प्राइमरी PCI हो रही है. You see these established points sitting over here. These cardiologists at Mayo Hospital, they're all doing primary PCIs. I know it because I've worked with them and they are fabulous workers. Salam, you and your team, and madam, your team are all doing fabulous work. Jinnah Hospital is doing primary PCI, Sheikh Zayed is doing primary PCI, and Mayo Hospital is doing primary PCI, and of course, Punjab Institute of Cardiology is doing primary PCI. A difference that the Punjab Institute of Cardiology has been able to produce is that like what needed to be done, we have a 24/7, 365 plan going on as far as primary PCIs are concerned. And we have been doing this for this year since 27th of Ramadan. This was my target at that time, and from there we are onwards. As Dr. Saab has pointed out, we don't need every center to be working at night. Punjab Institute of Cardiology is a bigger center. It has more number of beds, yes, but of course not enough beds. And we are doing it as it is essential for us to be part of the community and to do it. But primary PCI show can only and only be done if there is administrative full support. यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को याद होगा जब ये हमारे न्यू में स्टेंट्स का अलावा मीटिंग इन दी डिपार्टमेंट और जब स्टेंट्स की शॉर्टफॉल हुई थी तो मैं किस तरह से जाके बल्कि कई बहुत सारे मेरे सीनियर प्रोफेसर्स थे उनके साथ एक हद तक मैं लड़ाई हाथापाई तक पहुँच चुका हूँ क्योंकि मुझे स्टेंट्स नहीं दोगे फिर बाद में भुगतना मेरे साथ आ गए. But anyway, this is all because of a friendly nature in which I could do these things and you have all done it. But primary PCI is something that is being done in Pakistan. It is being done thoroughly. Sindh में, Sakhar में, Karachi में, Hyderabad, Quetta. And by the way, those of you who do not know, the cabbage surgery has also started in Quetta. So Pakistan is gradually, our administration, our friends, the community is gradually improving. We need बहुत सारे steps हैं, जैसे कि रिजवान ने इतना खूबसूरती से बताया कि हम लोग वहाँ पे थे एम्बुलेंस सर्विस पे और आज कहाँ है और इनको पता है कि अभी ये सारी जर्नी कंप्लीट नहीं है, इन्होंने और आगे जाना है. उसी तरह से प्राइमरी PCI में हमें पता है कि हमें और आगे जाना है ताकि मैक्सिमम लोगों को कार्डियक सपोर्ट दी जा सके सो दैट जो सबसे जलील बीमारी है हार्ट की, द हार्ट फेलियर, व्हेन यू आर लिविंग एंड येट यू आर बेड बाउंड और यू आर नॉट एबल टू डू द रिक्वायर्ड वर्क, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अवॉइड. जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में, उस पर फैसला किया कि तुम्हें कितने दिन मिलेंगे, लेकिन उन दिनों को हम अपने लिए कैसे खूबसूरती के साथ गुजार सकते हैं, हमारी यही कोशिश है. Thank you. I would like to take Saqib Sheikhi sahab have some comments. Not some comments, but probably a lot of comments. Professor Bilal talked about finance and economics. Dr. Asif talked about health, teamwork. So I think in establishing all such programs which run overnight, which run 24/7, forget about doctors for some days, for some hours, maybe for some years, and they make money from the private practice and things like that. What about the rest of the team standing by at night? For example, the cath lab technician, the nursing staff.
psychology or philosophy of medicine. One of my mentors, who was the best graduate of this college, Professor Mahmood Ali Malik, one day he said that democracy means equality for all and not equality for some. So what about when I saw many centers doing primary PCI, and again the team at Punjab Institute of Cardiology, and the team at King Edward Medical College, and the team at Rahim P.R. Khan Shahzad Medical College, witnessed to that centers doing primary PCI were making people presenting with unsteady lying on the bed for 4 days before they can get the cath lab. So what about them? So I saw waiting list for a patient who had 99% stenotic proximal LAD for 3 years, and a person coming with 100% occluded LAD getting primary PCI done at the same time. So are you waiting for 99% stenotic LAD to get to the 100% when you do your glamorous job and not do your routine work? So we should not be, I'm not anti-development, but this is important that you must take care of people who are not only coming from ST elevation MI, but also people who are much sicker but are coming with non-unstable. And we all know that patient with unstable angina and patient with stent are much sicker than patients coming with stent. So we are, when we jump to the end of an evolutionary process through which developed countries have gone through, we forgot the journey and the steps to be taken to get to that peak of evolution. We forget those important steps. And then obviously we have a very larger problem of patients, young patients with valvular heart disease. I can tell you a boy or girl, 14-year-old with rheumatic valvular heart disease is a much sicker patient than a 14-year kid with leukemia. You can treat a boy or girl with leukemia. They are disease-free. You can give them bone marrow transplant. A patient with a bad valve is never disease-free. Even with best of the surgeons, with best of the prosthetic valve, he or she is coming to the hospital every month, every 3 months, until they are alive. So this is a country with a very, very wide problems, and no doubt that ischemic heart disease is one of the pandemic in this country, overshadowing many other pandemics. So my message is to all the youngsters that you have to get to the phase of development by step, and not neglecting. You can't jump on like a cartoon of Bugs Bunny or whatever. You can't keep on riding a staircase with the previous stairs falling down. I remember that now. You've got to get to the peak with the stairs and with the stones behind remaining as strong as they should be. So I have tried to evolve primary PCI, the institutes I have worked with help of all the younger team. Maybe it's not a one-person job. But at the same time, I have tried to take care of the patients who don't have heart attacks, who just had angina, thoracic, and we are only focusing on primary PCI. I know a wonderful work is done at King Edward. I work a wonderful job is done at Punjab Institute of Cardiology. And for Professor Bilkis, who stood here to me, she
up till now, I can't say anything about the future. The only personality on the heavens knows it. Up till now, anyone who has headed Punjab Institute of Cardiology has worked as head of cardiology or cardiac surgery here. From the day the Punjab Institute of Cardiology started till now, all COs have gone through this primary unit. And I agree with Professor Bilkis that there should be a constant exchange between the centers with postgraduate training and the centers with undergraduate and postgraduate education altogether. And I have a strong belief that no professorial label or award is fulfilled unless you have worked with undergraduates in that field. So maybe some of people, some of my junior colleagues who haven't worked in institutions where undergraduate training exists, like does not exist, like Punjab Institute of Cardiology or MIC, they must move for some years of their career to a place where there is undergraduate teaching and education and skill development, because without that, your label of being a professor is not complete. You cannot be a professor of a field, be it medicine, be it law, economics, or anything, unless you interact with undergraduates of that field. So I want to tell all my colleagues in King Edward Medical University that they are not at loss of anything. It's a wonderful place. If anybody asks again to have a place to work again in any capacity, it will be King Edward Medical University and not me. Thank you. I would like to take comment from Dr. Rizwan Naseem before we move on, because we have a couple of more comments and we have one question from the audience as well. अब किस तरह से
Rizwan Naseer, do you think it is possible, inshallah, when you pick up these people in the areas where the primary PCI center may be 2 hours away, in the district areas, I think if you pick up this ST elevation either in the community or at the DHU level, do you think we can still thrombolize them in the community? Because still we know there is a success rate of 60 to 70%. Start training the process. We will start, we ready to start as soon as the training is ready to start. Now we are in that kind of setup. The initiative has to be taken from your side. If our can do it, I'm so taking a smart better. People have lots of, people that we can do it. So you take the initiative and we show you will have full support from the government. Yeah, thank you. Can you use the other mic, please? Thank you. I think basically someone needs to take the ownership and have this project basically. And there should be, I think the parts of projects like making, making a board and a center, PPC center. They can actually get these people from over job and center. And you can provide various segments. हम लोग हर सारे प्राइमरी पीसीआई की बात कर रहे हैं। प्राइमरी पीसीआई से बेहतर है अगर आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और आप इलेक्टिव पीसीआई से इलेक्टिव मैनेजमेंट में चले जाएं, इससे पहले कि मायोकार्डियल होगी। लेकिन आप जितने मर्जी कैथ लैब्स लगा लें, डॉक्टर आयशा भी आप बैठे नहीं हैं, जितने मर्जी सारे हालात बेहतर कर रहे हैं, unless and until we focus and give due importance to primary prevention, we will never survive. आजकल हमारे यहाँ सच्चा बच्चा सेंटर्स के ऊपर तो बहुत जोर हो रहा है, नसबंदी में जरा कम जोर हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज द प्लेस वेयर वी नीड टू गो। हम लोग के प्राइमरी पीसीआई की इम्पोर्टेंस पे बहस नहीं करते, सिर्फ इस बात की बहस करो कि आपके ग्वाल मंडी में कौन से हालात थे, वीक के क्या हालात जा रहे हैं, आपके यहाँ शुगर का क्या हालात जा रहे हैं, आपके यहाँ कोलेस्ट्रॉल के क्या इश्यूज चल रहे हैं, आप बेसिक्स के बारे में बात करो। प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर महीने का 1000 रुपये का खर्चा है एट द बेस्ट। वो किस तरह से जॉगर्स खरीदो, वॉक करने चले जाओ, और जो डॉक्टर्स का लाइफ स्टाइल है वो मत अपनाओ। सुबह उठते हैं, अस्पताल आते हैं, शाम को नोट छापने के लिए जिस तरह लोग कहते हैं, हकीकत ये है कि आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई भी नोट नहीं छापता। आज आप में से डॉक्टर्स में कौन कितना भी कमाता होगा, आप में से कोई भी उतना नहीं कमाना जितना बैंकर्स या वकील या दूसरी फैसिलिटीज के लोग कमा रहे हैं। ये सामने हमारे लीडर्स बैठे हैं, कितनी आमदन होगी एक बैंकर जो इस तरह एक छोटी सी ब्रांचेस का यहाँ पर लीड कर रहा है, उनसे ज़्यादा कमा रहा है। तो इसलिए ये जो बात की जाती है कि हम लोग प्रैक्टिस करना करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। वी आर बेसिकली हेल्थ प्रोवाइडर्स फॉर द कम्युनिटी एंड आवर टारगेट फॉर द कम्युनिटी शुड बी नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड इफ एवरीथिंग फेल्स देन वी शुड टॉक अबाउट प्रिवेंशन। Thank you. In terms of, we have a couple of questions from the audience I will take. I wanted to comment, जिस तरह आपने awareness की बात की, I think public education is very important. And like I can tell you a small example, if you go to every bus station or every train station of UK, there is a posters over there for telling people that how to respond to a chest tightness or chest pain. And we can see a lot of advertisement on TV every day for a lot of thing about जो हमारे normal food items के, लेकिन अगर public awareness advertisement उसमें cardiac के भी जो कि बहुत ज़्यादा leading cause है death, उसमें चलना शुरू हो जाए, I think that will going to help a lot to develop this concept. So I will take one question from there first. I am assistant professor of cardiology here at PLB, and I am a proud student of Professor Sandeep Sugar, and obviously Professor Manar and Professor Nikhil. Sir, I want to tell you कि जो आपने हमें टेक्निकल क्लास शुरू किया था
के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली रीजन्स में डिवाइड करके 24 और प्राइमरी फैसिलिटी जा सकेगी अगर मेयो अस्पताल किंग एडवर्ड और इसके एलाइड जो हॉस्पिटल्स हैं यही ये चीज़ टेकअप कर रहे हैं कि और इन दिस पार्ट को जहाँ पे बड़े दादा का क्वेश्चन हो और ये शानदार इन सब जहाँ पे जो सारे हॉस्पिटल्स हैं जो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से एलाइड हैं अगर इन सब के साथ ही एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जाए तो मेयो हॉस्पिटल में भी रेफरल सेंटर फॉर दिस पार्ट ऑफ नाउ एंड आई वांट टू टेल यू गाइस कि हमारे पीजीआर्स हमारे एसआर्स हमारे एपीएस हमारे प्रोफेसर हम सब लोग इसके लिए टेक्निकली एडिक्वेटली ट्रेंड है ओनली नेक्स्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को पायलट प्रोजेक्ट में 100% सक्सेस। Thank you. I think you got a workforce of at least 2 primary PCS. If you have 12 trained people, you can run 2 state-of-art primary PCS and you need definitely the management. I think we are all getting to one point, as President said, that's an ownership. But very important thing is that ownership cannot be taken without authority. And I'm talking about authority of finance, and that lies with the higher administration of Government of Punjab. So it's not about having 12 or 14 or 20 people about trained to do private research. How many of them at your stage, at the stage of fully trained consultant like UK or America, are willing to spend one evening, one night in the hospital, which Bilal talked about, staying away from their private practice. So it's becoming to the finance. And okay, you can do it for one day without any reward from Government of Punjab. That's what I'm saying. What about the tech who is standing by you for evening and night? He's supposed to go to
then you have the flex of what are going to be their job specification and their terms of hiring. So that's what I'm telling you, that gets to the level of higher administration. One day, if Dr. Sakib is going to ask 5 techs that you are going to stay at night, 1 day a week, 2 weeks later, the Paramedic Association will have a demonstration against you. So you've got to have a full, defined by the laws structure, and the laws are provided by the higher administration. That is the bottom line. You can't afford to start a primary PCI program and then shut it down for administrative reasons. I totally agree. I think if you refer to my talk, and I put down the minimum criteria for running a primary PCI setup, you need to have 24/7 cover for physiologists, a radiographer, and at least 2 cath lab trained nurses, along with a cardiologist. So you may have all your expertise, but you definitely need a full team to run this service. And naturally, the availability of the beds and everything comes later on for that, which we create. So I think that is a very important aspect, along with financial aspect, is the manpower and the training of manpower. I will have a question. So, once again, Dr. Meera and Dr. Rogers, so perhaps an answer to your query and perhaps a counter question to the panel would be public-private sector partnership. We saw when the health exam card was in full swing, BIC and other institutes who were overburdened with their waiting list systems, their waiting list times came down. How much did they came down? Colleagues from BIC will be able to comment. So public-private partnership was a really good solution to bring down the list, waiting times for institutes who were overburdened. I just want to ask the panelists, have they ever thought about this scenario as being a solution to what we're talking today, public-private partnership? Why does the same consultant doing or having a patient in PIC tells them or has to tell them, obviously because of institutional limitations and the waiting times, that your angiography can't be done for the next 4 weeks. And the same consultant goes next door to a private hospital next to PIC and does it in the same evening. So public-private partnership, if that comes in, can't we solve a lot of the things that we're discussing today? Thank you for asking that question. Public-private partnership is something that is totally different as compared to health provisions. I'll first take up the second part of the question regarding PIC and its waiting lists. Currently, when Professor Sakib was doing after the hospital and then when I took over the hospital charge, we established a policy that anyone who comes in for an angiogram, and if there is an indication for an angioplasty, it will be done there and then, no questions asked. Either the patient is going to prepare and pay for it or the government will look after it. You'll be glad to know that today, the Punjab Institute of Cardiology does not have waiting list as far as angioplasty is concerned. Right? Now, as far as angiograms are concerned, there are 2 sets of it, those who were previously and those who are at the moment. At the moment, as far as those patients who are coming in, their angiograms are done, provided there is no contraindication, like renal issues, lung issues, heart failure problems. So those angiograms are done before they are discharged, and if possible, a need for a PCI is taken. Now, get to the other side. I showed you that Punjab Institute of Cardiology has about 1,000 patients coming in daily in our emergency. Right? What does this mean? This means 1 patient every minute or every next minute is cardiac. Now, translate it to only, let's say, आप बहुत सारे activities में ECG करनी थी, जिनका सर BP check किया, जिनका सर reassured किया, कि पुराने मरीज थे, etc. Heart failure patients थे. But let us say there are about 200 of them who require admission. We have a bed shortage.
that we approximately do about 35,000 this year, hopefully 35,000 angiographies and angioplasties every year. What does this mean? This means 3,000 cases per month, 25 days working in a month, so you can understand that there is more than 120-130 patients being done daily. Now, we have ability to do about 10 bypasses daily, but that is not the only surgery we do. We have got congenital heart, and then we have got a lot of valvular heart in these patients who have been waiting for surgery, so got vast rheumatic problems, etc., etc. So we keep about 6 or 7 on that side for coronaries, and about 3 or 4 as far as 2 or 3 for that, and 1 as far as the complex other problems. Yes, we have a waiting list as far as coronaries surgeries are concerned, but we are trying to control it as much as possible. But this control, I can tell you for sure, is not possible even if we do 30 surgeries a day. Why? Because there are a big population base behind it. There's a big set of individuals. There should be 1 bed for every 700 individuals in a community. That is the figure. Now, Pakistan has a population of 220 million, and I would say हमने बहुत सारे 4-5 200 रखा है, तो 220 को हमने बाकी 20 को हमने इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर दिया है, और फिर भी इन 2 करोड़ लोगों के लिए 20 करोड़ लोगों के जितने बेड्स की जरूरत है वो हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ एक मेजर इशू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है। हमारे यहाँ मेजर इशू इस बात का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो आप बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। पानी जब बहता है ना वो रास्ते भूल जाते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग का इलाज शुरू करते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 95% burden is paid by the Punjab and Pakistan governments. They are not paid by the individuals. जो individuals को खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं वो खुद ब खुद प्राइवेट सेक्टर्स में जाके बाईपास और बाकी चीजें करवा लेते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर्स भरे पड़े और प्राइवेट सेक्टर्स भी इंटरनेटेड। इस वक्त उस किस्म की हमें प्राइवेट जरूरत नहीं है जैसे कि शायद यूके में जरूरत हो कि जहाँ हमें फाइव पेशेंट्स ओवर हियर देयर आर ऑलरेडी टू मेनी पेशेंट्स और द साइड टोटली कम। हाँ, आज जस्ट और में क्या है काफी सारी है, लेकिन और से जब बाहर निकल के आप सिर्फ आगा मेडिकल से बैठे आप रसूल तक तो गए चीजें बहुत कम हो गई। So we have a major issue, etc. So Sakib Sahab ने एक बात रेस की थी about the general financial issues. जो भी बंदा डॉक्टर बनता है, जो नर्स बनता है, उसको पता चला रात की ड्यूटी करनी है, एक्सेप्टेड। लेकिन आप तो जो दुनिया में फिरते रहे, आप दुनिया की नौकरियां हैं, आप अगर उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें और यहाँ के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, unfortunately we have had a breakdown. This breakdown we started something in the 70s. पहले तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह से आप इतना बचा सकते थे कि आप आराम से अपने लिए को 15-20 साल में घर भी ले लेते थे, गाड़ी भी ला लेते थे। आज अगर किसी शख्स का अपना बेसिक खर्चा चला जाए उसकी तनख्वाह से, वो बहुत अजीब सी बात है। असल हकीकत ये है, इस वक्त एक शख्स की जो एक इंटरनेशनल तरीका निकाला गया था, आप एक शख्स का हाउ टू डिटरमिन व्हाट शुड बी द सैलरी, 1/3 should be for the rainy day, 1/3 for his developmental, and 1/3 should look after his living expenses. आप से जो लोग सऊदी अरेबिया वगैरह जाके नौकरी करते हैं तो पता है कि अगर उनको सरकारी घर ना मिले तो वो आपको 4 सैलरीज देते हैं एक्स्ट्रा ताकि आप आइश ले सकें। That is roughly the cost of living that they
इस वक्त सागर कितना हाउस रेंट मिलता है? 4,000, 5,000, 10,000, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का तो रेंट भी नहीं उतने भाव में है। हकीकत ये है सारी। So we have got a major issue, and since Dr. Qazi, our secretary sahab, is also over here, and he is a great pusher and a Julian and a great guy. So I'm sure when he will sit down with his team, they will need to sit down and revise and look at these aspects and give it to the government. So these are the issues जो पूरे हकीकत को रहती हैं. लेकिन let us not be distracted by this fact. Today's symposium designed so well by Dr. Asif etc. and the team is about cardiac care and primary PCI. So उसका इस बात को डाला है. I'd like to add something to a very pertinent aspect to your question, which is very important. Unfortunately, when I talk to a lot of hired people who happen to be good friends and colleagues when Health in Safeguard was started, a very, very important factor lacking in this wonderful system is lack of clinical audit. So when you are practicing in a government institute like yours, you have senior people looking at you, you talk to your friends, should we do this, should we do that, should we do stents in this patient, or should we send this patient to bypass surgery, and things like that. So you have an, even if there is no audit system within the financial setup, you have an audit system built in an institute. Unfortunately, that clinical audit system in the private sector does not exist. I have a patient in Punjab Institute of Cardiology. I believe government, CTO, RCA, untouched, and put a stent in LAD without telling him, probably you should go ahead for bypass surgery because we can't do CTO intervention in timely manner with finance and all that. And if I do only LAD, a lot of people are looking at me and probably Dr. Sagar is not doing the right job. But in the private sector, I can get away with it because there is no clinical audit system. You know, when all your international exposure and treatment, which can be so helpful for maintaining these systems here, that unfortunately, the biggest lacking thing in healthcare, in Safeguard system at this moment is lack of clinical audit. Why the gynecologist is doing 99% C-section? Is there a clinical audit past that? Why every angiogram done by a cardiologist is ending in 1 or 2 stents? Is there a clinical audit for that? So unless you bring the equal clinical audit system in private sector as in public sector, the private-public partnership will always be flawed by incentive-based proceedings. I would just like to especially welcome my very dear friend and a finance wizard of Pakistan over here, and a very, very proud son of King Edward Medical College, Dr. Ahmed Saeed, who is presently looking after the Pakistan finance. And can you please stand up and show your face to everyone? This is extremely important because in the cardiology world, he did his house job and he in your hospital cardiology department for 1 year and then said, after you got me, Thank you very much. I wanted to a couple of comments. One of the things, in terms of the human, burnout, you're talking about doing 3,000 angioplasty in a month. I can tell you, I did my fellowship in the highest sector of UK, and we do 3,500 in a year, and done by a team of 10 cardiologists over there. So you guys are doing a brilliant job, but I can tell you, if you keep doing on this pace without expanding this workload, dividing this work, you guys are going to get burned out, and that is very important aspect when we need to look in the future. We are a good big team, and each person does primary work only once a week, and you put in a once a week. This way is burning
Yasmin Rashid, the teacher of teachers, is among us, along with the guest of honor, Professor Mahmood Shaukat, Professor of Pediatric Surgery, and our Vice Chancellor, Professor Mahmood Ayaz, is sitting with him, and Secretary Health, Dr. Ahmed Javed Qazi, who is also a proud Californian. Give a big hand to Professor Yasmin Rashid. Now I would like Dr. Asif to please continue with the speakers. Thank you very much. I think we'll be winding our talk. One or two more final comments. I think Dr. Tariq Azim want to say a few comments before. I think I'm sure Professor Nahar, he is doing a wonderful job. But doing is not sustainable. And this shows our system needs to improve. We need to spread out the work to Mola Punjab, so that not every patient who has a heart attack is looking for Punjab School of Cardiology. We should empower and be able to deliver this service closer to people's home, and which is possible to cover, like I was saying, 26 catheters, all it needs is a framework where this service will be delivered in other centers as well. Not only in PIC, they should do the other centers should share the burden. Thank you. Great to have you over here. We have been discussing about the primary and class issues over here, and we've been discussing a little bit about health topics. आप सारी चीजें की उस्तादों के उस्ताद हैं, तो आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा है। और इसमें हमें कहाँ क्या क्या तकलीफें होती हैं, मांगने वाले का फर्ज है कि मांगे, देने वाले का फर्ज है जो दे सके वो देता जाए। हम लोगों का काम है चीज़ों को बताते जाएं कि हम लोग कहाँ दिखते हैं। आपका फर्ज है कि आप आगे हमारे आप पे सरकार से हुकूमत से और मदद लें ताकि आपके जो सेंटर्स हैं, क्योंकि जितना दर्द के साथ आप बतौर एक डॉक्टर के, बतौर एक प्रोफेसर की, और फिर सबसे बड़ी बात एक बतौर एक माँ के समझ सकती हैं कि लोगों की तकलीफें कितनी ज़्यादा हैं और हमारे मिसाइल की महदूदी बहुत सारी है। आप लोग खुद बहुत सारी तकलीफों में से गुजरी भी हैं और आपको मालूम है कि हमें ख्वाहिश माली बहुत ज़्यादा, हर बंदे के पास जाएंगे, हर कोई कहेगा हमारी ज़रूरत, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के बारे में आपको बताना ये चाह रहा था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आज आपकी वजह से और आपके बहुत सारे पिछले साथियों की वजह से आज कहाँ खड़ा है कि हम तकरीबन 36,000 केसेस कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के। आज एक भी एंजियोप्लास्टी वेटिंग लिस्ट में नहीं है। एंजियोग्राफीज का विषय एक थोड़ा सा नंबर है, बाईपास का क्योंकि हमारे वसाइल और चीज़ों में महदूद है। आपने हमें बहुत सारी सपोर्ट दी है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। आज सिर्फ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्राइमरी फीस नहीं दे रहा। Thank you very much. This is a wonderful session, and I must conclude this with a great applause that such a wonderful session has been performed. Great applause for all the speakers that are present here. Now I would like our second session of the inaugural session to be started here. I would like please. Thank you very much. Please have your seats. King Edward Medical University, a historical institution that has a long history of 164 years. And we are so proud that 5th Universal Healthcare Symposium has been held in collaboration with CAMCA UK. The theme is Healthcare Service Development and Innovation. I would like to invite on the stage our Honorable Minister of Health, Professor Yasmin Rashid, along with our Vice Chancellor Professor Mahmood Ayaz,
Our guest of honor is Professor Mahmood Shaukat, Professor of Pediatric Surgery, and also the Chairman, Corona Expert Advisory Group. I would also like to invite on the stage the Secretary Health, Dr. Ahmed Javed Qazi. I would like to request the Chairperson, Kenka UK, Dr. Tabinder Dugal, to have the seat. On the stage, Professor Saqib Saeed, and the Program Director, Dr. Athar Ahmed Saeed. Education breeds confidence, and the confidence breeds hope, and the hope breeds peace. With these beautiful words of Confucius, I would like the first speaker, Dr. Tabinder Dugal, please come on the stage and say a few words. Dr. Tabinder is, I think she is not here. So I would like our Vice Chancellor, Professor Mahmood Ayaz, to please say a few words on this occasion. Actually, Tabinder is conducting a session in another hall, and I'm sure that he'll be with us in a few minutes, and she will be speaking with you. So, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. मैंने आपको सलाम किया है, मैं दोबारा करूँगा. Assalamu alaikum. Let's make sure that you're awake. Thank you. So, it's a great privilege to welcome our own teacher, Professor Yasmin Rashid, who's on the stage. Professor Mahmood Shaukat, and Qazi Ahmed Javed साहब. पहले तीन नामों के बारे में आप ये सुन लें कि one way or the other, they have either been in the faculty of King Edward Medical University or they have been teachers of King Edward Medical University. So what a great luck that King Edward Medical University can produce such great teachers. But उसके अलावा national level के politicians as Professor Yasmin Rashid is. Please welcome her. And we have got great academicians who actually rose to become vice chancellors and then became the chairman of the board of governors of King Edward, Professor Mahmood Shaukat, Illuminati. भाई आपने ताली अच्छी बजानी है, इतने बड़े-बड़े लोग आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता. और bureaucracy में हम कहीं पीछे नहीं हैं. Doctors they acquire the topmost positions in bureaucracy as well. और उसकी आप जो उसकी शहादत है अपने सामने देख रहे हैं. And you can see Qazi Ahmed Javed sitting here. He is the Secretary Health, and we are very proud that हमारे इस इदारे ने topmost bureaucrats पैदा किए, great politicians पैदा किए, great academicians पैदा किए, और उसके साथ you can see Athar Saeed who is representing the Camca UK, and Tabinder will be here with us. और बाकी हमारी जो है सारी की सारी, Tabinder is already here with us. So Tabinder is speaking in this intro. So great to have all of you here. So I think this is the inaugural session, and I am indeed very privileged to extend my heart-warm and the heartiest welcome to the greatest treasure of King Edward Medical University, that is a brilliant alumni. And you know that the alumni, which comprises the Camca UK, the Camcana and the Apna, every year in December, just like great migratory birds, they will come back to their own homeland. They will land here and they will teach us. And every time they bring us with great gifts. And these great gifts are in the form of the wealth of knowledge which they bring to us and the wisdom of experience which they bring to us. And this time they are a step forward and they have created a huge amount of academic activity. We are so proud of them कि उन्होंने इतनी effort की कि एक दिन प्योर उन्होंने Camca UK के लिए रखा, फिर Camcana के लिए रखा, फिर अपना के लिए रखा. So we are really indebted to them. Because we have got constraints, because we cannot send so many people abroad to get trained. But they get trained in the highest centers of learning all over the world. And we are indeed very, very actually indebted to them that they come back into this
this institution and teach us everything. They teach us the knowledge, they teach us the skills, they teach us everything. और मैम ये हम बताते चले कि जो ये एफर्ट ये करते हैं हमारे लिए, हम उससे पीछे हटते नहीं हैं. We reciprocate. और since November 15th, we have conducted a staggering amount of 40 workshops. इनके ताउन के साथ, लेकिन हमारी फैकल्टी ने 40 वर्कशॉप्स की और हमने तमाम अपने स्टूडेंट्स को, अपने तमाम फैकल्टी को इन वर्कशॉप्स में लगा दिया. सो ये अब 17 तारीख तक 17 को हमें बंद करना पड़ा बिकॉज वी हैव गॉट सम पोस्ट सिम्पोजियम वर्कशॉप्स एज वेल. But this was a huge effort on the part of the faculty, and the faculty deserves a lot of appreciation because every one of the faculty is sitting here today. Thank you very much, faculty. And usually का नाम नहीं ले सकता, but they have been a great help in this. और मैम मुझे आपको पता है कि it has been only a few weeks or other months that I've taken up this job as the vice chancellor of this university, and I've taken this job with great pride and great humility. But with this pride and humility comes a lot of sense of responsibility and duty towards King Edward. And my focus is only academics and nothing else. And we will create an academic environment, and you will see that our students will excel in everything. Because I've advised my students to cross the barriers of knowledge, to go abroad and learn as much as possible. And this activity is also a part of this endeavor. And I want them to learn skills which are not known into this part of the world. Like, so many other things which we don't know over here. So they go abroad and they will seek everything, they'll seek knowledge. But I don't want them to forget the basics of being a doctor. Because if as a vice chancellor, I have to teach them only one subject, I will only teach them morality. How to be a good moral citizen of Pakistan, a basic moral citizen of Pakistan. And if I have to teach them one skill only, I will only teach them the skill of lending a helping hand. Because ये जितना हम knowledge gain करते हैं, जितनी हम skills acquire करते हैं, in सब का it spirals down to only one thing, and that is that patient who is actually lying in the emergency and waiting for our help, waiting for us to be there, waiting for us to be actually there at any time of the day and night to actually help them out. और अगर हम ये नहीं कर सकते, तो फिर इस wisdom का, इस knowledge का, इस skill का, there's no use of that. So I would advise them to actually be very, very vigilant about this, that in this pursuit of academic excellence, this pursuit of academic knowledge and acquiring skills, we would never, ever forget a patient who's lying in the emergency of Mayo Hospital, Delhi Hospital, Delhi Hospital, and all the teaching hospitals. With this, I'm not going to take much of the time, because if you allow me, I'll go on and on, but it's a great activity, and I'm so indebted to everybody who's here, to the people who are sitting on the stage, to the people who are there in the auditorium. I am really very grateful for participating in this huge amount of academic activity. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Now I would like to request Dr. Kavita Dugal. She is the chairperson of CAMCA UK, and all these sessions are possible because of her enormous help over all these days. Thank you very much, Saira, and all these team people who are sitting on the stage. I stand here very humble. When I come back, and we come back here every year in an attempt to exchange knowledge, not to give you. यहाँ के डॉक्टर बहुत लायक हैं, हमसे ज़्यादा लायक हैं. But it's fine-tuning of things which we try and tell them about, or share knowledge and exchange knowledge. और ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, हम थोड़ी सी नमी करने आते हैं. That's it really. And Professor Mahmood Ayaz was very kind. We don't do much. We just come here and we share expertise and exchange expertise. That's all. And we also try as an organization which I head, which is CAMCA UK. We also try and partake in several charitable projects. We have just recently participated in this housing project with Asif Jah in Gujarat, Balochistan. We have done that, and we've also participated in Muslim campaign with Meeti Zindagi, and we try and help in so many ways. And that's all we can do really. हम वतन से दूर हैं, लेकिन हम आते हैं और वतन हमारे दिल में है, लाहौर हमारे दिल में है, and हमारे दिल में ही रहता है. So that's all I have to say. Any of us, if they want to get in touch a bit,
anything that they want to help with, help from us, from Chemical UK, we are always here. आप मुझसे मिल लें, email ले लें, हमसे बात कर लें, phone numbers ले लें. We are always ready to help you in any way, academic or non-academic or any charitable projects. We'll be happy to help you and partake in those. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Vindavinder. You are always very kind and helpful. Now I would like to invite the Secretary of Specialized Healthcare and Medical Education, Dr. Ahmad Javed Qazi, and he is a Campbellian, so have your hand for him. Very Honorable Minister of Health, Professor Dr. Yasmin Rashid Saiba, Vice Chancellor Sahab, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a pleasure and a unique honor being here and sharing a few words with the galaxy of stars in the medical education. As very rightly expressed by the Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, that we are really grateful to our alumni who come from abroad, particularly in the month of December each year, and they share their warm feelings and their knowledge and recommendations with various medical universities, and we also are benefited by such recommendations and suggestions. I'm sure a lot would be discussed during these meetings in various medical universities, including King Edward, whereby they would share what is being done globally, what are the best national or international practices, and what we can learn from others. It's not only one-sided learning, it's both ways. We take a lot of pride in our medical fraternity, the way these people have blossomed over years, and they have made a mark globally. And I'm really grateful to my teachers, to our faculty, who actually created this galaxy of excellent medical professionals which are rendering their services across the globe. At this time, since I'm occupying a different chair and donning a different hat, I would like to briefly talk about the administrative measures which have been taken over the years in order to improve the level of health services in our tertiary care hospitals. We have been learning over time that there are issues concerning human resource. There are matters related to the provision of finances. More and more budget is required in order to provide state-of-the-art medical equipment in our hospitals, and at the same time creating an enabling framework whereby both the faculty and the students may flourish. And I would not mince words and express very clearly that it is because of the vision and leadership provided by Madam Minister that we have been able to accomplish a lot many goals. Please join me in really efforts of Professor Yasmin Rashid Saiba, as she had been instrumental not only in launching the Universal Health Insurance Program, the one and only of its kind in South Asia, where the whole population of a province is covered and the program is really delivering. There may be certain issues here and there, but there is a framework provided by the cabinet where we address such issues, and by the grace of Allah the Almighty, more than 3 million people have gained benefit of this facility in the province till date. At the same time, I would like to share that the development budget for just one department of health in the province of Punjab, it has soared to more than 165 billion rupees. We have a development portfolio ranging around 670 billion, and you can understand how much importance is being provided to
to the healthcare in this province when we are spending more than 165 billion, out of that 670 million on just specialized healthcare and medical education. And if we add the development budget of the other health department, it would cross around 190 billion rupees. So such huge amount is being invested and diverted for the purpose of improved healthcare for the people of Punjab, and I'm sure the faculty, our doctors, our paramedics and nurses, they would leave no stone unturned in order to provide the most befitting health services for the people. Last but not the least, I would also like to mention that the number of medical universities is now 7 in this province. And a few days earlier, me and Honorable Minister Sahaba were discussing that when we passed out more than a quarter of a century earlier, we just had a section for medical education in the Punjab University. And then afterwards, University of Health Sciences and many other universities came up. And particularly, we have that University of Child Health Sciences in Punjab, which is the only of its kind in the world, as we have been informed. So this vision of bringing about that necessary improvement in the field of medical education, that actually requires a vision and then a strong will in order to implement such reforms. I'm sure under the leadership of our new Vice Chancellors who have joined their respective medical universities, these medical universities will flourish further. Obviously, they are not the glorified medical colleges. They are medical universities, and it gives me great satisfaction whenever I come across such sort of symposia or seminar where I get an opportunity to listen to a very honorable Vice Chancellor while they are expressing the leaps and the strides taken by them in order to actually graduate to a higher level. I'm sure with the support and guidance and recommendations provided by the alumni of these medical colleges who are, mashallah, now assuming positions of glory all across the globe, you will share your experiences with us and with the Honorable Vice Chancellor. And I assure you of one thing, that the Government of Punjab, the Department of Health, would definitely take your recommendation and suggestion very seriously, and we are always a phone call away vis-a-vis all Vice Chancellors. And once again, thank you very much for giving me this opportunity to speak, and particularly in the presence of Honorable Minister Sahaba. Thank you very much. Thank you very much. Our next speaker is the guest of honor, Professor Mahmood Shaukat, Professor of Pediatric Surgery, Teachers of Teachers, and again his work for Corona is marvelous. Thank you very much, sir, for joining us today. Thank you very much, all of you, for having considered me worth this honor. मेरा थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू का different होगा perspective. This is an academic congregation, and here people from both sides have come here to really improve and find avenues for cooperation. So दुनिया में जो तरक्की हुई उसमें Center of Excellence have moved. Medicine has become something like a science. It started like a massive speculation. एक अक्लमंद आदमी होता था, कुछ कह देता था, और वही उस ज़माने का इल्म होता था. And then gradually we moved towards hypotheses that can be tested. And that is how medicine made progress. So if you look at the Center of Excellence in the world historically, they moved with the movement of progress in economy, in education, in intellect, in their culture, and not saying it militarily also. I can't think of a nation who didn't make a mark in these avenues and became a leader in medicine. So जब हम सारे बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में जब हम कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा. So I'm just putting a question to all of you that we need to identify these voids in our society. What is stopping us from progressing? हमारे पास रिसोर्स की जो मीटिंग में मैं जाता हूँ, it ends up with one thing, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है. So I'm a person who would categorically oppose this idea. We have to create the resource.
22 करोड़ के मुल्क में आपके हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो ये तो खुद ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। वी हैव टू क्रिएट रिसोर्स। अब मेरा पॉइंट आप सबके साथ ये है कि व्हाट वाज द कॉमन फैक्टर दैट लेड टू द प्रोग्रेस ऑफ नेशंस? दैट वाज एजुकेशन, रियल एजुकेशन, नॉट इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज टू सम। जब आप किसी को टेक्निकल नॉलेज दे देते हैं, यू मेक अ रोबोट, एंड रोबोट इज लेस डेंजरस देन अ क्लेवर डेविल। जो हम एजुकेट करके एक आदमी को वी मेक हिम अ क्लेवर डेविल, आई कॉल दिस अ क्लेवर डेविल। ही इज बेटर इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट द सोसाइटी, और वो सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है एक अनपढ़ आदमी। तो अगर हम वाकई आगे जाना चाहते हैं, अगर हम वाकई तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे निज़ाम में खराबी क्या है। तो हमारे निज़ाम में जो मेरे मुताबिक सबसे बड़ी खराबी है वो है रियल एजुकेशन। वी थिंक दैट imparting certain database to people makes them educated. It doesn't. तालीम तब आती है जो आपकी सोच बदलते हैं, जो आपका किरदार बदलते हैं, जो आपकी ज़हनियत बदलते हैं। हमारा एम्फेसिस तालीम पे नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। स्किल्स और नॉलेज तो हम अंडरग्रेड को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में भी हम करते हैं। वी टॉक ऑफ स्किल एंड नॉलेज, वी डोंट टॉक ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड कम्स विद एजुकेशन, रियल एजुकेशन। वो एजुकेशन जो आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पढ़ाती है, वो एजुकेशन जो आपको करेज सिखाती है, वो एजुकेशन जो आपको मेक्स यू एबल टू स्टैंड अप टू चैलेंजेस, द एजुकेशन दैट मेक्स यू पावरफुल एंड करेजियस, दैट इज मिसिंग इन आवर सिस्टम। जब ये आ जाएगी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी आ जाएगी, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने आप कम कर देंगे, आप साइंटिफिक सेशंस को साइंटिफिक सेशन बना देंगे, उनमें आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कम हो जाएगी, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, and that is when the world will recognize. हम जो मर्जी कहते हैं, the fact remains that we don't even come on the map of the world of technology and science. तो ये कौन सोचेगा अगर हम नहीं सोचेंगे? So मेरे नज़दीक ये occasions when we can talk of broader things and we can talk about a bigger canvas, they should be utilized for thinking about the future destination of this country, of this nation. और यही हमें करना है। So हमें produce करने हैं लोग who are really educated. And the aim of both sides here should be to make KEMU as a center which produces men of caliber, which produces men and women of character. That will determine, वो खुद ही तरक्की करेगा, चीज़ें खुद ही ठीक होंगी जब आप people with character develop करते हैं। Education does that. That brings character into the personalities of people. That brings courage into the personalities of people. And that is what we need to do. आजकल बड़ा एक रिवाज है, मैं जहाँ जाता हूँ people talk of a 7-star doctor. क्योंकि ये फैशनेबल है, वी टॉक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, फैशनेबल है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अल्लामा इकबाल के शेर को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा था सितारों से आगे जहाँ और नहीं। मेरा ख्याल है हमारे लिए सितारों से पहले जहाँ और नहीं। सितारों को एक तब करेंगे जब हम दुनियावी तौर पर नॉर्मल इंसान बना लेंगे। हमें नॉर्मल इंसानों की ज़रूरत है, मुझे बहुत नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत नहीं है। आई नीड गुड नॉर्मल पीपल हु कैन बिहेव, हु कैन अंडरस्टैंड दैट दे कैन प्रोग्रेस विद द सोसाइटी। द प्रोग्रेस इन अ नेशन हैज़ टू बी इंक्लूसिव, not taking out people, not marginalizing large segments of the society, not disfranchising people from the health benefits and from the other benefits. Society develop होगी जब आप mature होंगे आप तालीम से and moral character से, और वो maturity आपको आएगी जब आपकी education को improve किया जाए। Education is not knowing a set of facts. That to me is just transfer of knowledge. Education is what makes you a human being. What brings you closer to the universe, what brings you closer to human beings, what brings you closer to God. और अगर हम आज ये सोचें कि हमने सबने बैठ के इन voids को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे कल्चर में इशूज़ क्या हैं, हमारे प्लेसेस ऑफ वर्क में झगड़े क्या हैं, हमारे लोगों के कैरेक्टर में झगड़े क्या हैं, फिर हम आइडेंटिफाई कर लें और फिर हम तरीके ढूंढने के हमें कैसे ठीक करना है। I think this is one thing that we ignored for ages, and we just confine ourselves and we think that if we advance in skills, if we advance in knowledge, we will be advancing. I can surely tell you, I'm a student of history. I read the political history, and I read the history of medicine. I have about 10 books on history of medicine, how it progressed. And I have a special interest in that. So there's never been progress in medicine if the society hasn't grown up, if the society hasn't progressed. So I think the aim before the 2, or perhaps before the 3 organizations would be to bring a change in terms of the quality of people that it is, not the numbers. आप डॉक्टर 2 लाख और बना लें, अगर वो उनमें क्वालिटी नहीं है, it will not serve your purpose. 5 लाख नर्सें बना लें, if they're not quality nurses, it will not serve your purpose.
ہماری ریسرچ میں چاہیے. مجھے یہ ریسرچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے واٹ از دی ہسٹورولوجی آف اے کولڈ ناڈل آف تھائرائڈ. مجھے ریسرچ یہ چاہیے what are cost effective mechanisms, how do I handle such great load of population, how do I make my workplace safe for the workers and for the people, how do I improve my hospitality, how do I spread out to the people, how do I create centers not of excellence but of excellent service. Excellence خالی progress technology نہیں ہوتی ہے. Excellent وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. So how can I make a center of excellence in providing service? For that we have to innovate, we have to create. دنیا میں کاپی کر کے کسی ملک میں ترقی نہیں. We have to have indigenous models, we have to create models, we have to develop and we have to create knowledge. یونیورسٹیاں بننے کا جو پرائمری مقصد ہوتا ہے وہ ہے adding to the existing knowledge, not merely following what is happening around the world. So once you move on to this, the sky is the limit and the progress will be endless. I'm very grateful for all of you for a very patient hearing, and let me just mention Asif Jha is sitting here, and two of the examples of KE graduates are Asif Jha and Amjad Sabit. I think we must cooperate with them. آپ لوگ کبھی visit کرنا چاہیں تو آپ کو یونیورسٹی کو بھی visit کریں. Just see what marvels can be produced by just changing your thought process. Not following what is customary, not following what is to be followed, but challenging. علم جو ہے وہ آپ کو چیلنج کرنے سے. دنیا میں جن لوگوں نے نام بنایا, they were not the people who followed things blindly, they were the people who challenged things. So we have to create a group of people who have the ability to challenge, who have the ability to bring a change. So I hope this will work, and I hope we'll overcome the obstacles that we've had for years. Thank you very much. Thank you very much, sir, and a great gratitude to Mr. Wasif Nagi for joining us today. Thank you very much. Now I would like to invite on stage a role model, a true inspiration, absolutely, an iron lady who has done a lot of work for vulnerable populations, marginalized communities, and as Professor Mahmood Shaukat has said, that's something that should change the mindset. So I am really honored to invite Professor Yasmin Rashid to the dais. Thank you very much, madam, that you have joined us today. اردو کہہ رہے ہیں, اردو نہیں سے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مرتبہ جب مجھے آئرن لیڈی کہا جاتا ہے نا تو میرے دماغ میں مارگریٹ تھیچر آ جاتی ہے. جب مارگریٹ تھیچر آتی ہے تو میرے دماغ میں الزائمر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ نہ ہو مجھے کہہ کے کل مجھے الزائمر ہی ہو جائے یہ باتیں سن سن کے. بٹ اینی وے تھینک یو ویری مچ فار وٹ ایور یو کالنگ می. مجھے جو اپنے بارے میں جو لفظ سب سے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ مجھے بطور استاد ریکگنائز کرتے ہیں. بہت سارے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوں گے شاید ان کو میں نے پڑھایا بھی ہوگا جب میں کنگ ایڈورڈ میں پڑھا رہی تھی, اور میرا سب سے اچھا وقت جو ہے پڑھانے کا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں گزرا. تو میں 90 کی دہائی میں 1990 میں نے یہاں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ جوائن کیا. اس سے پہلے کیونکہ میں ایک لڑکیوں کے کالج میں ہوا کرتی تھی تو لڑکوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, اور لڑکوں کو ہینڈل کرنا اور مینیج کرنے کا طریقہ اور تھا. میرے نصیب میں یہ تھا کہ میں نے ان کو آبسٹرکس اور گائنی پڑھانی تھی. اب وہ مجھ سے بحث کیا کرتے تھے, میڈم ہم نے کوئی ڈلیوریاں کرنی, ہم کیوں کریں ڈلیوری آگے. میں نے کہا بیٹا اگر کسی نے کہہ ہی ڈالا تم کو کہ تم ڈلیوری آگے کر دو تو پھر کیا کرو گے. وہ کوئی نہیں جی. میں نے کہا ویسے تو ڈلیوری خود بخود ہو جاتی ہے, تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی, مسئلہ تب پڑتا ہے جب ڈلیوری نہیں ہوتی. دیٹ از دا ٹائم دیٹ نیڈ یو ہیلپ. تو آئی ہیڈ سم ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈس. یہاں بہت سارے ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میری تو بچے اب ان کی عمریں بڑھ گئی ہیں, پروفیسرز ہیں, ہنس بھی رہے اس بات پہ, جن کو میں نے لیبر روم کے سخانوں میں بند کر دیا اس وجہ سے کہ یہ ڈیوٹی بھی موجود نہیں تھے, اور میٹرنٹی ڈیوٹی ان سے میں زبردستی کراتی تھی. یہ مجھے کہتے تھے کہ میڈم وہ ہمیں ڈلیور نہیں کرنے دیتے. میں نے کہا میں کھڑی ہوں دیکھتی ہوں, میں کون تمہیں ڈلیور نہیں کرنے دیتا. یہ بیسکلی پڑھانا جو ہے میں سوچتی ہوں کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. میرا کیا قصور ہے بھائی, اگر آپ اپنی نالج ٹرانسفر کرتے رہیں تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو علمنائی ہیں جو یہاں سے پاس کرتے
गए और आज इंग्लैंड में हैं, यूके के अंदर हैं और अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो वापस जब अपने एल्मा मैटर में आते हैं तो इससे बेहतर कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती कि कोई नई चीज़ आपने सीखी, कोई नई चीज़ पाई, तो आप अपने कॉलेज, जो आपका कॉलेज था, उसके साथ आके शेयर करें और आपके बच्चे जो हैं दे कैन गेन नॉलेज होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो हम हर साल सर्दियों के महीने में हमारे मेले लगते हैं और माशाल्लाह बाहर से सारे बाल बच्चा आता है। मुझे अभी तक याद है, मैं क्लास में खड़ी होती थी तो मैं कहती थी कि तुम सारे जो हो ना अभी तैयारी कर रहे हो स्टेप्स की, क्योंकि फाइनल ईयर में तो या तो स्टेप्स की तैयारी कर रहे होते थे या प्लान की तैयारी कर रहे होते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि तैयारी कर रहे हो, वहाँ जाके मिसेस जोन्स और मिसेस स्मिथ की जाके तुम खिदमत करोगे, तो तुम्हारी खिदमत किसने देखनी? खिदमत तो तब करोगे जब पाकिस्तान में आके किसी की खिदमत करोगे। तो मेरा ख्याल है आप लोगों का पाकिस्तान में आना, और इसी तरह मुझे अभी बता रहे थे वाइस चांसलर साहब कि आप लोगों ने सैलाब के दौरान में भी बहुत मदद की, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। मैं क्योंकि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, तो जिस दिन मुझे मौका मिला और मैं मिनिस्टर बनी, मैंने पहला काम किया, पिछले खुदा जाने कितने सालों की हमारी ख्वाब थी कि गंगाराम अस्पताल के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बने, जिसके लिए हमारे पास वहाँ 22 कनाल ज़मीन थी। तो मैंने कहा कम से कम और कुछ नहीं, तो इस मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने एल्मा मैटर को तो कुछ वापस लेके जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 550 बेडेड नया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खड़ा है, और ये पहली एडिशन है 17 साल के अंदर कि गंगाराम अस्पताल के साथ कोई चीज़ अटैच हुई है। मेरा ख्याल है इसी तरीके से जिस तरह आप लोग आते हैं हर साल, न सिर्फ आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई में हेल्प किया सबको, लेकिन आपने इस चीज़ में भी सबकी मदद की है कि अगर बताना खास तौर पर ज़रूरत पड़े आपके कॉलेज को, तो आप यू ऑल पार्टिसिपेट, यू ऑल कंट्रीब्यूट एंड ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ योर कॉलेज। लेट मी टेल यू, I enjoyed teaching in King Edward most. I had a chance and opportunity to work in 3 medical colleges. I started my career in Fatima Jinnah Medical University College, then came to King Edward Medical College, then also had a chance to go and teach for 3 years in Rawalpindi Medical College. But when I used to come, when I was teaching, and then had a chance in the last 8 years of my career of teaching in KE again, and as head of department in Obs and Gynae, it was always a pleasure to teach the students of KE Medical College. They were always far above the standard that you would normally see in other medical colleges. And I remember one day at that time I was an associate professor, and I was, RHO compatibility was a subject that I loved teaching. मेरे अपने दिमाग में आया कि भाई 22 मिलीग्राम्स में ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों क्रॉस करेंगे, व्हाई डजंट इट क्रॉस अर्ली। मैंने अपनी जो हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स की किताब है उसमें तो कोई जिक्र नहीं था। खैर मैंने किताबें ढूंढनी शुरू की तो उसमें निकल आया कि जी बिकॉज इट्स कैरिड बाय एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, and when serum albumin gets saturated, then the unconjugated part crosses over and goes and deposits cells in the basic ganglia. मैं बड़ी excited, मैंने कहा this is something that I have discovered myself today. मैं क्लास में आई, मैंने RHO compatibility पढ़ाने के बाद हमेशा बच्चों के लिए एक बोनस क्वेश्चन तैयार करती थी। मैंने कहा I'm going to give you a bonus question today. So I said, all right, who's going to tell me why would unconjugated bilirubin cross over only at 22 milligrams? Why not before that? And I was so happy to see that in the next 10 seconds there were 2 hands up right on the back bench. और दोनों हाथ उठाया हुआ, दोनों बेचारे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा बताइए, एक ने मुझे कहा कि मैडम क्योंकि वो सीरम एल्ब्यूमिन कैरी करती है ना उसको, तो वो सीरम एल्ब्यूमिन जब सैचुरेट हो जाएगी तो नेचुरली क्रॉसिंग ओवर द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो दूसरा कहता है मैं भी यही कहने लगा था। बट आई वाज सो हैप्पी टू सी that the basic knowledge of our students, because of the amount of effort they used to put in, was so good as compared to any other institutions. Therefore, it was always a pleasure because it was a nice interactive class. You could talk to students, and it was not possible for any professor to
come unprepared. You had to actually prepare yourself because there were always some very pertinent questions that the students would put up to you and you have to explain it. So I think it was an excellent experience and I'm very happy to see all the alumni here. And I'm hoping that inshallah you continue doing what you people are doing. And I think what is extremely important is keep yourself involved with your institutions. वापस इंसान जहाँ से मरने जाता है वापस आते हैं तो सारी जवानी भी याद आ जाती है और बचपना भी याद आ जाता है और जो वक्त आपने अच्छा गुजारा होता है वो भी याद आता है. तो एक तो अच्छी यादों के साथ आप दोबारा अपने आप को एसोसिएट करते हैं और दूसरी बात ये है कि जब आते हैं तो आप कुछ ना कुछ हमेशा अपने इंस्टीट्यूशन को दे के जाते हैं. मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप साथ में बड़ी मेहनत की. ये मैं आपको बताती चली जाऊँ कि जब से हमें मौका मिला हमने एक काम ज़रूर किया क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी उम्र के हैं जिनको याद होगा कि एक वक्त था हमारे पास जब हमारे पास अस्पताल की दवाई नहीं हुआ करती थी. जेबों में हम लोगों से मांग मांग की दवाइयाँ जेब में लेकर खिला करते थे. एक वक्त आया ब्रेनुला आ गया. हमारी ब्रेनुला की एक्साइटमेंट भी ख़त्म होती थी. वो भी हम उठा उठा के अपनी जेब में लेके फिरते थे कि किसी वक्त मरीज़ को ज़रूरत पड़ जाए. उस वक्त में और फिर ये भी मरीज़ों के लिए दवाई मंगाने के लिए मरीज़ों को पर्ची लिख के देते थे. आज शुक्र है खुदा का कि जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इस हुकूमत ने उसमें ये किया है कि हमने सेहत कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया. तो मैं इस बात पे ख़त्म करूँगी कि जब से हमने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया है तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस कार्ड की सहूलत ले चुके हैं और लोग बिल्कुल खुश हैं इस सेहत कार्ड की वजह से. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब किसी के घर में बीमारी आए और इंसान बड़ा मजबूर होता है सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है कि किसी तरह सेहत मिल जाए. तो उसको अगर ये पता हो कि मेरे पास 10 लाख का एक कार्ड है जिसकी वजह से मैं अपने ख़ानदान की या अपने घर वालों का इलाज करवा सकता हूँ तो इसी वजह से इंशाअल्लाह as long as we have an opportunity to stay in the government and we come into the government again, I assure you our major focus is improving health in Pakistan. We have already invested on 11 mother and child hospitals, which are all in the periphery, particularly keeping this point in view that we still have a very high rate of infant mortality and maternal mortality. Therefore, we concentrated on those particular areas where we need to give them all the help. So with these words, thank you very much for giving me a chance and opportunity to be here with the alumni. आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं और इंशाअल्लाह आप हमेशा अपना आना जाना इसी तरह रखिएगा. बहुत मेहरबानी. पाकिस्तान का जिंदाबाद. Now I would like to request Dr. Athar Ahmed Saeed, who is the Program Director of 5th Universal Health Care Symposium, to please announce certain awards for the award winners. Thank you very much, Sarah. ये हमारा 5वां यूनिवर्सल हेल्थ केयर का प्रोग्राम का सेशन है और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मैडम का भी 5वां है क्योंकि हमने ये जब शुरू किया था 4 साल पहले ये प्रोग्राम तो आइडिया ये था कि एक्टिविज्म इन्फॉर्म एक्टिविज्म फॉर हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. और मैडम उस वक्त नई आई थी मिनिस्ट्री में. उन्होंने अपना एक 5 साल का प्रोग्राम बताया था जो हमने प्रिजर्व किया और लिख के रखा हुआ और हो सकता है कि अगले इलेक्शन से पहले ये मैडम की आखिरी अटेंडेंस हो इस सेमिनार में. होपफुली आइंदा भी जारी रहेगी लेकिन वो जो हमने लिखा हुआ है उसके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे मैडम. तो मुझे शुक्रिया अदा करना है 2-3 लोगों का. वासिफ नाकी साहब तशरीफ लाए हैं बड़ी दूर से और काफ़ी चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँच गए. मुझे जाहिद साहब जो कि मेरे दोस्त हैं और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त हमें दे रहे हैं. काजी साहब जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे मेरी बात हुई थी कि वो हॉस्पिटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्पेशली जो मोर्टेलिटी और मोबिलिटी है उस पर बड़ा यूजफुल काम कर रहे हैं. और महमूद शौकत साहब जो हमारे सीनियर कंट्रोलियर हैं से हेल्थ फाउंडेशन के बारे में बात हुई थी और आई थिंक इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेरे ज़िम्मे ये काम आया. बड़ी खुशी की ये ड्यूटी है कि मैं 2 अवार्ड्स अनाउंस करना चाहता हूँ. एक अवार्ड है हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक अजीम के लिए जो कि कंट्रोलियन है 1988 के और ये अवार्ड कहलाता है एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस.
طارق جو ہے وہ ڈسکا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ کسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اور ڈسکا کے لوگ کتنے ہیں؟ ایک صاحب ہیں میرا خیال ہے. ویری نائس. تو یہ وہ صاحب ہیں جن کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہارٹ وارمنگ ہے کہ made it to the top on his own. He worked at KE, then at Punjab Institute of Cardiology, اور اس پر برٹن میں. So I have a great pleasure in saying that he is one of the top interventional cardiologists in the UK. وہاں پہ جو national conferences ہوتی ہیں, جو live demonstrations ہوتی ہیں, اس میں سب سے پہلے طارق عزیز کا نام آتا ہے. So excellence in public service, طارق عزیز. اگلا اوارڈ میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ثاقب شفیع کے لیے. ثاقب شفیع میرے بچپن کے دوست ہیں. سینٹ ماؤنٹ اسکول میں ہم اکٹھے تھے, پھر گورنمنٹ کالج میں, پھر کے میں. اس کے بعد انہوں نے بہت کمال پیدا کیا انٹرنیشنل کارڈیالوجی میں, اور بہت ساری پوزیشن آف رسپانسبلٹی میں رہے. میو ہاسپٹل میں بھی رہے, اور پی آئی سی میں لاہور میں, اس کے علاوہ فیصل آباد میں, رحیار خان میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اعجاز تھا اس نے آبادی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. تو ثاقب شفیع صاحب ہر جگہ پہ داستان چھوڑ کے آئے, اور انہوں نے اپنی سروسز ایسے زبردست ڈیولپ کی کہ میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گئی. تو ثاقب شفیع صاحب بہت بہت شکریہ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پہ محمود ایاز صاحب کا جنہوں نے آج کی میٹنگ کو پاسبل بنایا, اور ان کے ڈائنمزم کا کہ ہر جگہ وہ خود موجود رہے, اور سائرہ کا جو کہ سب چیز کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. Thank you very much, Dr. Akhar. Now I would like to request the Honorable Minister of Health to please present the shield to our guest of honor, Professor Mahmood Shaukat. Ajo bhai, ajo. The second shield is for our next guest of honor, the Secretary, Specialized Healthcare and Medical Education, Dr. Ahmed Jabir Qazi. Bhaiya, photographer. Now I would like to request our Vice Chancellor, Professor Mahmood Ayaz, to please present a shield to Honorable Minister of Health, Professor Yasmin Rashid. बैठ के बना लो, आराम से बन जाएगा, आगे ना आना. Thank you very much, sir. Thank you very much, madam, for joining us. And our poster exhibition is just outside the library hall. And I would like to have a tour to the research exhibition, so that the ideas and innovative challenges that healthcare is still facing, how the students, they are looking at it, how is their perspective. Give a standing ovation to the minister. We will cut it down to about 45 minutes. اور اس کا ٹائٹل اور تھیم ہے کہ رورل ہاؤسنگ, ڈیسنٹ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ فار ایوری ون. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے, اور سوال زیادہ تر آپ کے ہوں گے. میں یوں شروع کروں گا کہ باری باری پینل کو انٹروڈیوس کرواؤں گا, اور اس کے بعد ان سے ایک آدھ سوال پوچھوں گا, اور اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. تو آپ ویسے زیادہ تر لوگ جو آڈینس ہے ان کی جانکاری کا کچھ یاد نہیں ہے کہ 1970s میں جو پیپلز پارٹی کے لیڈر بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا تھا, تو انہوں نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مقدار. So that slogan has so much traction that the People's Party, I think, still reaps benefits of that slogan. So جو essential نیڈس ہیں انسان کی, اس میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ ریزیڈنس ہے, مکان. تو جو ہمارے دائیں لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیشن, گھر اور فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. تو ہم ان سے باری باری پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے ہاؤسنگ کے بارے میں.
سب سے پہلے آصف جاسر اپنا تعارف کروائیے اور یہ بتائیے صرف 2 منٹ میں کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے اور پانی پرووائڈ کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے. 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر اور زیادہ گیسٹ تو نہیں کر رہے تو آپ کلاس میں آگے آ گیا اگلی سیٹ پہ آگے اگلی سیٹس پہ آگے. جی سارے اسٹوڈنٹس آگے آ جائیں پلیز. آپ کیسے ینگ ہو میں کرسی کی خواہش نہیں رکھتے ہیں, ذرا جلدی گئے تاکہ وی کین میک آؤٹ. سب لوگ کھڑے ہو اپنی سیٹوں سے چھوڑ کے آگے آ جائیں. فل ان آل دی ایمپٹی سیٹس. گڈ ناؤ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی سیٹوں پہ بھی سننے کا اتنا موقع ملے گا جتنا پچھلی سیٹوں پر ملے گا. So, young ladies on the back here, please come forward. آگے آ جائیں. یہ اگلی سیٹوں پہ تشریف لے آئیں اور جلدی کریں ذرا. آپ کو سونے کا موقع برابر کا ملے گا لیکن بھاگنے کا موقع کم ملے گا. Please come forward. Come to the front row. جی آصف کیا سب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے, اس لیے آپ اگلی سیٹوں پہ آ جائیے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک اچھا ڈاکٹر اچھا کمیونٹی لیڈر کیسے بن سکتا ہے. تو یہ ہماری ڈاکٹر کی صبح بھی ہم نے بات کی. اور مجھے فخر ہے کہ اس سے بڑھ کے بزنس کیا اور آج کل فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ. تو آپ کو بتانا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں سندھ کے صحراؤں کو ہم نے سیراب کیا. سندھ کے صحراؤں میں ہم نے 1500 پانی کے کنویں بنوائے اور آج کل ہم سیلاب کینکا یونی کے تعاون سے ڈاکٹر تابندہ بیٹھی ہے اور پھر یونیورسٹی ان کی نوکرائی کے تعاون سے اور اپنا کے تعاون سے وی آر انوالوڈ ان میکنگ ہاؤسنگ فار دا فلڈ کمیونٹیز. ہمارا اس وقت کسی بھی پرائیویٹ یا پبلک آرگنائزیشن کا سب سے زیادہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اور ہم 500 ہاؤسنگ بنا رہے ہیں 400. تو یہ ہمارا کام ہے. اس طرح تو آپ جی حامد عزیز صاحب سب بارے میں بتائیے اور سب ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی جو اس کے بارے میں آپ آپ کو نہیں پتا. Thank you, Arvind. I can see Manvi, Professor of Radiology, Milan, Mohyuddin, here my class fellows. یہ لوگ میڈیسن میں آگے چلتے گئے اور ہم لوگ جو ہے نیورتھلیس یہ ہاؤسنگ کا ٹاپک آپ کو بڑا بیکار سے لگ رہا ہوگا کہ ڈاکٹروں کا ہاؤسنگ سے کیا تعلق ہے. سوائے اس کے انہوں نے اپنی خاندان کرنی ہے. بٹ نیورتھلیس پاکستان میں جس طرح ڈاکٹر محمود شوکت نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن جو ہے ایٹیچیوڈ ہے وہ ہولسم نالج سے آتا ہے جو آپ کو سوسائٹی کے بارے میں ہوتا ہے. اور آپ بھی سروس پرووائڈرز اور ہیلتھ سروس کے جو کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کمیونٹی میڈیسن میں دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ اور پورٹیبل واٹر کے نام سے سینیٹیشن کے نام سے ان سے ہو رہی ہیں. اور اب جو اختلاف آئے ہیں اس میں بھی ہماری فورٹی ہاؤسنگ جو ہے وہ بہت اس کا جو جتنا بھی کلیم ہے وہ سارا یہ رورل جو زوننگ ہم نے کی ہوئی ہے اور اس کی بری انفورسمنٹ پہ اس کا بلیم آ رہا ہے کہ بھائی بیڈ ریور کے اندر ہم نے گھر بنائے ہوئے تھے. کیوں ایسا ہوا تھا کہ ہم نے جو سندھ کا کچے کا علاقہ ہے جہاں پہ ہر 10ویں سال سیلاب آتا ہے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنایا, کسی نے اس کو روکا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں جو سب سے انٹیلیجنٹ مائنڈ
पंजाब के लोगों को शायद इतना पता नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग मेराज खान उधर से बिलोंग करते हैं और बलूचिस्तान और मेरी सिंध के इलाकों में, वहाँ पे बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है इस वक्त, और दोबारा लोगों को घरों में आबाद करना एक बहुत बड़ा मसला है। और इसमें आप लोगों की जो है वही जो ओपिनियन है मैटर करेगी। और इसमें सबसे पहले जो है वो लेजिस्लेशन, जोनिंग और उसकी इन्फोर्समेंट के दरिया के रस्तों में घरों को नहीं बनाना है हमें, और दरिया से हट के बनाना है। उसके बाद जो है बाकी पार्टिसिपेंट्स आपसे अफोर्डेबल हाउसिंग और कैसे गरीब को घर बन सकता है उसके बारे में बात है। थैंक यू। जी थैंक यू हामिद। ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है? हाथ खड़ा करें। और कितने लोग आपके और कितने लोग ऐसे हैं जो कि देहात में रहते हैं और देहात में सोलर पैनल लगा हुआ है? जी एक्सीलेंट। कौन सा देहात में रहते हैं? कोई तो एक बार जब आप तक माइक आते हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ शुएब अहमद साहब को, जो कि सोलर पैनल्स के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इसमें PhD किया है, वैसे ही एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तो मुख्तसरन शुएब साहब अपने बारे में बताइए 2 मिनट में कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। Policy sides में है, how to implement technology, because I've taken for my thesis in the new. आज मैं प्रेजेंटेशन जो थी, ये जैसे अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर्स जो हैं इनके में एक ह्यूमैनिटी से हमदर्दी का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है और ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आई थॉट कि मैं अपना अगर कुछ ख्याल पेश कर सकूँ कि जहाँ पैरिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए जब आप काम कर रहे हैं, एनर्जी का ताल्लुक है, उसको हम कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लाइफ में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस पर मेरा एक ख्याल हमने अपना ख्याल प्रेजेंट किया। जिन लोगों ने सुना है तो मैं लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन अगर उनकी तरफ से, तो बहुत शुक्रिया। जी भाई अगर आपने फोन किया जो देहात वाले सोलर पैनल वाले साहब हैं, बताएं कौन से देहात में रहते हैं? भाई पहुँचा है नहीं आपका? नहीं पहुँचा। जब माइक दोबारा पहुँचाएगी उस तरह महमूद शौकत साहब के घर सोलर पैनल लगा हुआ है। महमूद शौकत साहब को सब जानते हैं, हेल्थ फाउंडेशन चलाते हैं आजकल और डॉक्टरों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और वासिफ नागी साहब को भी सब जानते हैं। वासिफ नागी साहब जो हैं वो जामिया अखबार के एडिटर हैं कई साल से। ये उतने पुराने जामिया अखबार पढ़ाते हैं और ये मेरे स्कूल में पढ़े थे, और ये इतने पुराने जितना मेरा स्कूल पुराना है, यानी कि 19 से ताल्लुक़ है। और मेरे दाएं तरफ में मुझे याद साहब बैठे हैं, जिनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है और आप श्योर उनको अच्छी तरह जानते हैं और ये भी आपको खूब जानते हैं, इसलिए एहतियात कीजिए। तो मेरा ख्याल है आज के टॉप विद वन टू क्वेश्चन। ये बताइए सबसे पहले आसिफ जान कि आपने पानी की फराहमी के लिए घर में कुएं लगाए हैं बहुत सारे, और सुना है कि वहाँ पर उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो ये बताइए कि आपने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, कितना खर्चा आता है, और क्या आप उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं, ख़ासतौर पे जो आर्सेनिक की कंटामिनेशन होती है उसको कैसे रोकते हैं? प्रथम हमने घर पर थरपारकर का नाम अगर आपने सुना हो, थरपारकर एक वास्ट डेजर्ट ऑफ सिंध, जहाँ तकरीबन 26 लाख रकबा मील पे फैला हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 18 लाख है। और इसमें छोटे छोटे गाँव हैं जिन्हें गोट कहते हैं,
ایک وقت تھا کہ تھرڈ مارکیٹ میں منڈی ہوتی تھی. اب اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی NGO کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تعاون سے 1500 سے زیادہ کنویں بنائے ہیں, 2000 ایکڑ سے زیادہ زمین کو کلٹیویٹ کیا ہے, اور وہاں آپ کو جہاں ریت ہوتی تھی وہاں اس وقت بھی لہراتے کھیت نظر آتے ہیں. اور پانی کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں, اس کا پانی کا چیک اپ بھی کرواتے ہیں, اور پانی کو پینے کے لیے انسانوں کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے. اور جو WHO کے اسٹینڈرڈز ہیں, جو اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. جو مینولی ڈگ ویل ہے اس کو پرانے اولڈ طریقے سے بوکی سے پانی نکالتے ہیں اور بکٹ سے نکال کے پھر اس کو کھینچ کے دوسرا ہم ویلز بناتے ہیں سولر آپریٹڈ, سولر پینل سے چلتے ہیں وہ ماشاء اللہ. اور یہ بڑے ڈیوریبل اینڈ اونلی سسٹینیبل سورس آف واٹر جو ہے گھر کے لوگوں کے لیے یہ ڈگ ویلز ہی ہے. اور اس میں ہم نے یہ گھر کے لوگوں کا فائدہ کیا ہے. ایک تو انہیں میٹھے پانی پینے کو مل جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے انہیں سورس آف انکم ہے. 2 لاکھ روپیہ مینولی ڈگ ویل کا خرچہ ہے, اور 3 لاکھ روپیہ جو سولر آپریٹڈ ویلز کا ہے. اس میں آدھے پیسے کو مزدوری مل جاتی ہے. ایک کنواں جو بنتا ہے 2 سے 3 ماہ میں تیار ہو جاتا ہے, اور اتنا سسٹینیبل ہے کہ ایک کنویں جو اچھی طرح ہم اس کی سپرویژن بھی کرتے ہیں, یہ آئندہ 50 سال بلکہ 100 سال تک ان کو پانی کی پیاس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال میرا حامد عتیق صاحب سے ہے. حامد کا یہ خیال ہے کہ جو فلڈ سے افیکٹڈ لوگ ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں, ان کو ہائی ٹیک قسم کے کانکریٹ اور بریک اینڈ مارٹر کے گھر نہیں بنانا چاہیے, بلکہ ان کو ڈائریکٹ فائنینشیل ہیلپ کرنی چاہیے, اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں جو کہ سستی ہو کہ خود گھر اپنے بنا سکیں. اور اس بارے میں ایک سے آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیا پاورٹی کا یہ مطلب ہے کہ پاورٹی آف ایمبیشن بھی ہو, اور پاورٹی آف ایسپریشن بھی ہو, اور پاورٹی آف ڈریمس بھی ہو. تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں غریب لوگوں کو غریبوں والے گھر بنانا چاہیے یا غریب لوگوں کو واسطہ والے گھر بنانا چاہیے جو کہ پکے ہوگا. تھینک یو مچ. بالکل صحیح بات کی کہ ہر ایک کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اس سے ہم گورنمنٹ کے فنڈ سے سارے پیسے دے کے اور اچھے سے اچھا گھر, اچھی سے اچھی صحت, اچھے سے اچھی تعلیم اور ساری چیزیں دے سکیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بینگ ورکنگ ان فائنینشیل سروسز آف پاکستان کم ٹو اس نالج پہلے سال پتہ لگ گیا تھا کہ مسلم میں کوئی قومی خزانہ نام کی چیز نہیں ہوتی. سو ہر سال جو جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, پھر نئے سرے سے ٹیکسوں سے یا قرضوں سے پیسوں کو لے کے آیا جاتا ہے. اس وقت جو ہم نے گورنمنٹ آف یو کے ساتھ جو یہ ایسٹیمیٹس کی ہیں, وی نیڈ $16.1 بلین ٹو ریہیبلیٹیٹ پیپل, ان کے روزگار, ان کے گھر اور ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. بہت سارے پل بہ گئے ہیں, بہت ساری سڑکیں بہ گئی ہیں جن کو دوبارہ بنانا ہے. تو یہ سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک آدمی کو اس کا جو ہے وہ جو اسٹیٹ کو دینا چاہیے اس کا حق ملے. لیکن اتفاق سے آج صبح میں جو ہمارے NCM کے سابق پرنسپل تھے ہاؤسنگ والی جو سیمینار تھا, اس میں یہ ٹولڈ اس کہ سارے ملک کی پر کیپٹا ڈیلی انکم جو ہے 90% کی $1 دے سکتا ہوں, اور جو ہم متمول لوگوں کو ملا دیں تو سارے پاکستان کی ایوریج انکم کو $4 ڈے سے پر منتھ سے کم ہے. اور میں اگر اس میں یہ ڈالر کے کرنٹ اپورڈ ریٹ کو دیکھتا ہوں تو اس میں $3 کی. سو وی ہیو اے ویری ریسورس لیکنگ کنٹری. ہم 300-350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, صرف جنرل موٹرس کی چھوٹی ہے. سو یہ لگتا ہے یہ پاسبل اگر ہو جائے تو ہم سب کو یہ کر دیں, ورنہ ہم اگر انہیں فلڈ سے پہلے والی صورتحال میں بھی لے آئیں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہوگی کہ ان کو دوبارہ روزگار ملے گا. یقین کریں کہ وہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کے اپنا انتظار نہیں کر رہے. ہر کسی نے آصف صاحب کے نوٹس کہ اپنا جو ٹھکانا ڈال دیا ہوا ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور جس حالت میں وہ آج طور پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صحت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی زندگی کے لیے اچھا
से 6 घर बना सकते हैं, या 100 गुजारे लायक घर बना सकते हैं, या 1000 के करीब लोग छत मुहैया कर सकते हैं. सो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि इतनी बड़ी आबादी में जब आप काम करने निकलते हैं तो फिर तरफ करने पर गवर्नमेंट फंड से आपको बहुत बेसिक चीज़ों की तरफ वापस आना है. जी शुक्रिया अमित. आई थिंक दैट लॉजिक मेक्स सेंस. इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोवाइडिंग high quality stuff and accountable quality stuff which is more affordable and benefits more people. तो एक सवाल मेरा है शुएब साहब से, और उसके बाद आसिफ शाह साहब एक रिमाइंडर पेश करना चाहते हैं हाउसिंग के बारे में, और उसके बाद इट विल बी ओपन टू यू ऑल ऑफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस. स्टार्टिंग विद द जेंटलमैन इन द हाथ जिनके घर सोलर पैनल लगा हुआ है, जहाँ पे अभी तक रोमिंग माइक नहीं पहुंचा. तो शुएब साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि सोलर पैनल के जरिए एक विलेज को पावर सप्लाई दी जा सके जो कि कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हो और कम्प्लीटली सफिशिएंट हो? शुएब साहब. जी बिल्कुल, पहली बात है ये बिल्कुल मुमकिन है और बहुत सारी जगहों पे ये किया जा रहा है और इससे सक्सेसफुल हो. अब जनरली जैसे पूछा जाता है कि कितनी कीमत आएगी, ठीक है ना, तो जनरली सोलर के सिलसिले में ऐसे कहा जाता है कि उसकी पर वॉट एक कॉस्ट का एस्टिमेशन होती है. आई थिंक ये जैसे विलेज का है, ये सब मीडियम साइज एक प्रोजेक्ट बनेगा डिपेंडिंग ऑन द विलेज, उसकी आबादी कितनी है और उसको ऑपरेट रखना पड़ेगा. इसमें बैटरी की जो है स्टोरेज भी रखनी पड़ेगी ताकि शाम को जब स्टोरेज नहीं होगा उसको अगर भी 3-4 घंटे या 2-2.5 घंटे तक बिजली मिल सके. तकरीबन इसकी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से स्लाइटली लेस दैन $2 पर वॉट के हिसाब से इसकी कीमत पड़ेगी. इट इंक्लूड्स ऑल इंस्टॉलेशन और रिक्वायरमेंट इंस्टॉलेशन और तमाम सिस्टम की जितनी कॉस्ट है उसके हिसाब से ये मुमकिन है किया जाना चाहिए. जी थैंक यू. आसिफ शाह साहब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मेरी नज़र पड़ी है उमर सादात साहब पे जो कि ऑडियंस में बैठे हैं, तो वेलकम करना चाहता हूँ. और जस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम, इज द हंटेरियन प्रोफेसर फॉर रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन द यूके. इट्स अ ग्रेट ऑनर जो कि कभी कभार पाकिस्तानियों को मिली. एक्चुअली सिर्फ एक दफ़ा पहले मिली है. आपको पता है वो पहले कौन साहब थे जो हंटेरियन प्रोफेसर थे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के? किसी को पता है ऑडियंस में से? वो अयूब खान रमैया थे जो कि probably one of the greatest Californians who ever lived. उनके बारे में गूगल करके देखिए ज़रा, और he was quite a remarkable personality. और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो साकिब सईद साहब हैं जो कि ऑडियंस में मौजूद है. ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट टीचर, वेरी गुड फ्रेंड. वेलकम. तो आसिफ शाह साहब आप घरों के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं बताऊँ जी, इस दफ़ा फ्लाइट में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग ला सकते हैं. और 2 दिन पहले हम FFJ की रुकनाई के साथ खादिम मुस्लिम गोदर के साथ हम राजपुर में थे. वहाँ FFJ की रुकनाई की तरफ से हमने एक पूरी बस्ती बनाई है और फिर हम एयरपोर्ट से में थे. आज भी ऐसी सूरत हाल है कि लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं. पानी आज भी 4-4 फुट 6-6 फुट पानी
اور ارتھ کو ریزیلینٹ بھی ہوں. تو انشاءاللہ جیسے ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں یہ نیکسٹ 50 ایئرس تک انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ڈاکٹرز کی اکراس دا گلوب پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت سپورٹ ملی ہے. ان سب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ 500 گھر تو اس میں جو آغاز تھا ڈاکٹر تمندا کی طرف سے ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں شی سینڈ اس لاٹ آف منی فار فلڈ ریلیف. اور اس کے بعد گھروں کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور خالد گوندل صاحب نے FMJ لوگنائی کو ہمارے ساتھ ملایا. پھر اپنا والے مل گئے اور انشاءاللہ اس وقت ہم چاروں صوبوں میں مور دین 500 گھر بنا کے دے رہے ہیں. اور یہ پکے گھر ہیں جس میں وہ آسانی سے, کیونکہ بچے بھی ایک فیملی کے 5-6 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گھر نیکسٹ 2 منتھس میں بن جائیں گے اور وہ ان گھروں میں شفٹ بھی ہو جائیں گے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ مزید ضرورت ہے, مزید گھروں کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں, مگر جب تک پوری کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو یہ وہ لوگ بستیوں میں نہیں بس سکتے. بہت شکریہ. جی تھینک یو آصف جان. جو رومنگ مائک اگر آپ پرووائڈ کریں, سوال ہے یہاں پہ. اس سے پہلے ایک منٹ رکیے گا. وہ صاحب جو اینک لگائے بیٹھے ہیں کونے میں, ان کے گھر سولر پینل لگا ہوا, ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو مائک وہاں لے جائیے. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, آپ ٹھیک ہیں؟ جی یہ بتائیے کھڑے ہو کے اور مائک کے قریب منہ کر کے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کس گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا سولر پینل کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اور سولر پینل سر وہاں پہ ہمارے گاؤں میں لگائے ٹیوب ویل, وہاں پہ ٹیوب ویل. آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل سر. ٹیوب ویل کے لیے یوز ہوتا ہے وہاں پہ. اور مطلب مختلف تعداد میں, اگر بڑا ٹیوب ویل ہے, بڑا ٹیوب ویل جو ہے اس کے لیے زیادہ تعداد میں لگے ہوتے ہیں, اور جو چھوٹے ٹیوب ویل ہیں ان کے لیے کم کرتے ہیں. اور وہ ٹھیک کام کرتا ہے, اس کی ایفیشنسی سے آپ خوش ہیں؟ سر ایفیشنسی یہ ہوتی ہے کہ اگر تو سبزیاں وغیرہ جس طرح اگانی ہے بالکل گھر کے پاس ہی انہوں نے چھوٹا ٹیوب ویل لگایا ہوتا ہے, جس کے لیے گھر کے لیے یا کچھ بزنس کے لیے انہوں نے سبزیاں وغیرہ اگائی ہوتی ہے. بڑی تعداد میں کاشت نہیں کرتے, اس سے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے میں سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں اس سے اگاتے ہیں. سوری کون گاؤں کا نام لگتا ہے؟ توسا شریف کے ساتھ ہے سر, کوٹ کے سامنے. تو یہ بتائیے کہ توسا شریف کا جو علاقہ ہے وہاں پہ تو سیلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے یا ایکسپیرینس کی ہے؟ جی سر, سٹی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے ہی متاثر ہوئے, تھوڑی مقدار میں زیادہ, اور فصلیں خاص طور پہ اس بار بہت ہی کم پروڈکٹیو. اور آج کل کیا حالات ہے, بہتر ہوئے ہیں؟ سر بہتری ہے, لیکن لوگ گھروں مطلب جو گھروں کی ریہیبلیٹیشن تھی اس میں زیادہ تر پرابلم ہے. باقی فصلیں تو ابھی تک نہری, جو ہمارے نہری پانی کے ساتھ فصلیں ہوتی ہیں تو نہریں جب تک نہیں, مطلب نہری پانی نہیں چلے گا تب تک اس کے لیے لنک کے نال ساری جو چکی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن ہے دوبارہ. جی تھینک یو. آصف جان صاحب نے ذکر کیا یہ ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں بہت کام کر رہے ہیں. تو جی جو پہلے سو لیڈی وتھ گلاسز سیکنڈ رو, اس کے بعد میں ریاض. میرا نام عائشہ ہے, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ایٹ کنگ ایڈورڈ. My question is regarding community development. There's a principle in community development that you highlight the strengths of a community and you generate revenue off of that, and then you work on the weaknesses of the community. So when we talk about funds that should be generated for this housing, how can we identify the strengths of the community and uplift the communities from a grassroots level so that they can generate their own funds? Is that a possibility in Pakistan? دیکھیں فنڈس ایک تو گھروں کے لیے گورنمنٹ فنڈس دے رہی ہے, دوسرا ڈونرز ہیں جو فلانتھروپسٹ ہیں, دے آر پرووائڈنگ فنڈس. تو ہم جو گھر بناتے ہیں یا اس طرح کے کمیونٹی سینٹر بھی ہم نے بنائے ہیں FJP کی تعاون سے, تو اس میں ہم جو اونر آف دا ہاؤسز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ بھی یا تو مزدوری کرتے ہیں
भी हो, अगर पार्शली लोन को कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो वो उसमें हम मदद कर देते हैं। मगर ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात के लिए लोगों को मोटिवेट करने की। गवर्नमेंट शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ने सर्वे किए, पार्शल अमाउंट गवर्नमेंट भी दे रही है, मगर ये है कि जब तक उनको मोटिवेट ना किया जाए कम्युनिटी लेवल पे कि वो खुद से थोड़ा बहुत तो उन्होंने अपना किया हुआ है, मगर दे नीड सपोर्ट। उस सपोर्ट के साथ ही उनको हम मुकम्मल कर दे सकते हैं ताकि वो उन पे पीसफुल लिविंग अपनी करें। ये वाला माइक दे दो ना। Thank you very much for allowing me to speak. There was a question about the working of tube wells on solar panels. If you travel from Lahore towards Multan on the motorway, or from Lahore towards Peshawar on the motorway, so in so many areas you will find that there is a small tube well which is being solar powered by a panel. और पहले मुझे देख के बड़ा हैरानी हुई कि मैंने कहा ये क्या शुरू हो गया, बट देन आई saw them growing up more in number, and then I realized that the electricity cost for running a tube well is so much high that the farmers have actually indigenously developed their own solar plates, and they have converted that solar energy into the tube wells. So the tube wells with the help of solar panels they work very well. तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और उसमें इस तरह हुआ कि what happened was that when the floods were there, so at that time हमारी किंग एडवर्ड की टीम ने रश किया towards northern areas के जहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि northern areas में शायद तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। But northern areas, since I was born in Peshawar and I was brought up there in KPK, so we went there, but then we very quickly realized that there is an altitude gradient. तो वहाँ पे initial तूफान तो बहुत आता है, but the actually water moves away from that area very very rapidly. तो वहाँ पे पानी stagnate नहीं करता, but then as it moves towards the plains of Punjab and then to Sindh, then the gradient of the gravity becomes lesser and lesser towards the seaside. तो उसकी वजह से होता है कि पानी वहाँ पे ज़्यादा देर तक stay करता है। तो उसकी वजह से फिर हमने अपनी तमाम तरह किंग एडवर्ड ने we created a fund. And to my surprise, the fund received huge amounts of money from not only Cambodians but people from abroad and from our own friends as well. और उससे फिर हमने ना 3 जगहों पे हमने अपनी एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया। नासिर हमदानी ये सिटिंग है जी, नासिर से है। सो हमने 3 जगहों को फोकस किया, कौंसा को, राजनपुर को और डीजी खान को। और बाद में गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम सिंध में भी जाएँ। और जब हमने इनिशियली सर हमने पहले दवाइयाँ भेजी, तो जिसमें हमें वहाँ से जो हमारी जो फॉरवर्ड टीम थी उन्होंने कहा जी जिंदा बचेंगे, खाने को कुछ होगा तो दवाई की नौबत आएगी। तो इनिशियली वी सेंट ओनली फूड, और जब हमने खाना वहाँ पहुँचाने की कोशिश की तो ज़्यादा कुछ राशन था, तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि ऐसी जगहों पे हमारे लड़के और लड़कियाँ नहीं जा पा रहे थे जहाँ पे अभी भी पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और कुछ जगहों पे तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वहाँ पे लॉन्चेस डालता था। तो हमने हिम्मत फाउंडेशन और मुस्तफ़ा फाउंडेशन की हमने हेल्प ली, और उन्होंने फिर अपने रज़ाकारों के ज़रिए ये तमाम सामान, और जिसमें नासिर हमदानी ने, नासिर चौधरी ने बहुत काम किया, एंड थर्ड वाज इनका नाम थर्ड वन एज वेल, क्या नाम था थर्ड जी? डॉक्टर राशिद। तो उन्होंने बहुत किया ये सेक्टर। फिर उसके बाद बारी आई मेडिसिन की। सो फिर हमने मेडिसिन की बहुत पहुँचाई, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें सिंध से कॉल आई मेरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास जो प्रेगनेंट वुमेन बहुत ज़्यादा है, सो वी रिक्वेस्ट हॉस्पिटल, तो उन्होंने जो है ना दे सेंट डॉक्टर्स। और मुझे अपने स्कूल्स को, बिकॉज आई थॉट इट वाज नॉट सेफ फॉर द यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू गो एंड सर्व देयर, बट अपने मेरे स्कूल्स में मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आई कि नहीं आप हमें जाने दें। सो अल्टीमेटली आई हैड टू लेट देम गो, टू प्लीज गो एंड serve those people, because I wanted that they should know that what's happening to our nation and to the communities. So it was a great effort on the part of the whole of the faculty and the students of King Edward Medical University. और अभी भी जो है ना अबाउट अ वीक बैक हमें कोई 1 करोड़ रुपए की दवाइयाँ मौसूल हुई हैं, जो मैंने नासिर से कहा है कि अब नेक्स्ट जो हमारे अपने सेशन जाएँ तो वहाँ पर जाके इन दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट फूड एंड मेडिसिन इज लाइंग विद अस एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। बट व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हाउसिंग, yes we are there to
to participate. जी थैंक यू वेल डन. आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने कितना काम किया. आपके वाइस चांसलर ने भी, आसिफ शाह ने भी और खालिद मसूद दोदल ने भी. तो यूके ने तकरीबन 40,000 पाउंड जमा किए आसिफ शाह को देने के लिए, और FCA की भी तकरीबन यही कॉन्ट्रीब्यूशन है. और जो अमेरिकन डेलीगेशन आई हुई है, नॉट अबाउट दे कॉन्ट्रीब्यूट सेफ फिगर ऑल चैनल थ्रू आसिफ शाह. तो आप हॉल में से कोई सवाल अगर है तो हाथ खड़ा करें और तैयार रहें सवाल के साथ, वरना आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी और ये बातें जारी रहेंगी जब तक कि दरवाजे तक खुलेंगे जब आप सवाल करें. तो इस तरह जब आप सवाल के बारे में सोच रहे हैं तो शुएब साहब कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं सोलर पैनल्स के बारे में. थैंक यू. मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा कि हमारे एक साथी ने पॉइंट आउट किया है कि सोलर के साथ वो सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं हो सकता जैसे बहुत खेतों में फसल लगे हुआ है. कि बाकी सोलर सिस्टम की एक लिमिटेशन है. इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोगों को अवेयरनेस जनरेट करें कि हमें सोलर सिस्टम के साथ इरीगेशन करनी है. तो हमें जो इरीगेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं लाइक ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल इरीगेशन, इस किस्म के तरीके जब हम अपनाएंगे तो हम थोड़ा सा ये जो लिमिटेशन सोलर की है इसको ओवरकम कर लेंगे. थैंक यू. जी थैंक यू शुएब साहब. ये बताइए कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पे कि इंडोर टॉयलेट्स नहीं हैं. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं या जिन्होंने देखे हैं या एक्सपीरियंस किया है बहुत खड़ा करें. सो एनीबॉडी हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड नो इंडोर टॉयलेट्स इन देयर विलेज और इन देयर कम्युनिटी. क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और पंजाब में ग़ालिबन जो इवन इन द रूरल एरियाज़ जो इंडोर लैबोरेटरीज हैं, इंडोर टॉयलेट्स हैं, वो उनकी अपनी ज़्यादा है. जबकि आई वॉज सरप्राइज टू दैट कि जो इंडियन स्टेट ऑफ बिहार है जिसका कि पॉपुलेशन तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है, 80% of the villages were not electrified, at least before 5 years ago when I last looked up the data, and majority of them did not have indoor toilets. तो अभी वो लोग ये कैंपेन कर रहे हैं कि इंडोर टॉयलेट्स बनाए जाए. मेरा ख्याल है कि जो नई हाउसिंग एस्टेट्स या घर जो बना रहे हैं आसिफा वगैरह में सारी ये सहूलतें शामिल हैं. तो जी जी फरमाइए. मैडम नासिर हुसैनी सर ने भी जिक्र किया यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ का और एफर्ट्स का, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाह रहा था. जी ज़रूर. जब सैलाब शुरू हुआ तो हमने मतलब तौसा से ही इस काम का आगाज़ किया. इस साल में मैडम प्रोफेसर सायरा अफजल और बाकी फैकल्टी के बहुत सारे लोगों ने इस इनिशिएटिव को लिया और हमने सबसे पहले वहाँ पर जो इनिशियल काम था उस दिन खाना पका के डिस्ट्रीब्यूट करने का शुरू किया. फिर राशन दिया, वक्त के साथ साथ मेडिकल कैंपिंग शुरू हुई. तौसा से जिस तरह पानी फाजिल में दाखिल हुआ तो मैं खुद अपनी टीम्स के साथ जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की टीम्स थी वहाँ पर मौजूद था उस रात. तो हमने रेस्क्यू के साथ मिलकर जब लोग निकल रहे थे कई के घंटे पानी में से आ रहे थे बाहर, उस रात उनको खाना दिया. इसी तरह चलते हुए राजनपुर तक गए और फिर मौका मिला सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, सब जगहों पर काम करने का. ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी. आसिफ शाह साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम का, तमाम हमारे खास तौर पर वाइस चांसलर साहब का और मेडिकल कम्युनिटी का. बहुत बड़ी एफर्ट हमारे लेवल की गई अपने लोगों के लिए. अल्लाह तबारक व तआला हमें और करने की तौफीक दे. जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात है सर, उसमें ना भी बहुत बड़ा काम करने वाला है. ये जो 400 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 500 की आसिफ शाह से बात कर रहे हैं, कुछ और NGOs हैं, दीनी जमातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज का हैं, ये मिला के भी हमारे 5,000 काम नहीं करते अगर सब इकट्ठे कर लिए. और गवर्नमेंट लेवल पर पैसे दिए जा रहे हैं, हर 70-80 हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि अपने तरफ में बनाए हैं. तो जो हर डैमेज हुए वो मिलियंस में है, लाखों में है. तो अगर हम लाखों खानदानों को रिहेबिलिटेट
जी सर, बस मैं एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा। मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ और इंडिया के आगे मेरा कौसा है और जब भी आया किसी डोनर ने हमारे दोस्त ने कहा कि मैं वहाँ पे 10 साल बनाना चाहता हूँ। तो मैं और मेरे वाले साहब वहाँ पे सर्वे के लिए जब गए तो वहाँ का फीडबैक ये था कि जो लोग तो सड़क के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे उन्होंने तो 5 घर बना दिए। जो गया सड़क के साथ वाले को देकर आ गया और जो पीछे डिस्टेंस में था 30-40 किलोमीटर पीछे है मेन रोड से कौसा शरीफ की जो मेन दरअसल रोड जा रहा है उसके पीछे, वहाँ पे लोगों का है ना बेचारों के पास कोई नहीं पहुँचा। तो सिटीजनशिप है, सिस्टम नहीं है, ऐसा सकल सर्वे का सिस्टम नहीं है। मैं अपनी मर्जी से चले गया, अपनी मर्जी से चले गए, जिसने गया वो देकर आ गया। तो ये काम अगर सही होता तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से होता और फिर वो ये होता है कि दोनों को कुछ लोग पिक कर लेते हैं और वो उससे बेनिफिट्स भी ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी ज़्यादा है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइट एंड कमेंट्स। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, वरना मैं हामिद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए। Thank you so much, sir. I am Dr. Faisal Ali from the Department of Anatomy. Sir, I belong to the city of District Cham, and sir, I have worked there at the basic health unit for 2.5 years. Sir, the area I have served at BHU, basic health unit, that was lack of resources were there, and there was no boundary wall, no washroom facility even for the doctor. And sir, my request and my question is that we focus our areas when there are some disasters, when there are some problems. Sir, why don't we keep on focusing these areas slowly and gradually, and we bring them out? Sir, like हमें हर बंदे को ख्वाहिश होती है that I attain the best level, मैं best position attain करूँ, best career attain करूँ। तो हम अपनी contribution के साथ हम उनको slowly and gradually अगर हम उस पर work करते रहें तो वो I think best condition में आ जाएंगे। तो basic health unit का इसलिए मैंने quote किया है कि मैंने वो situation देखी है कि that was the worst situation and that was unbelievable and no one was ready to focus that point. Thank you. जी थैंक यू। आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया कि हम लोग पोस्ट कोड लॉटरी, हमारी किस्मत जहाँ पैदा होते हैं उस जगह से, उस शहर से, उस गांव से मुतय्यन होती है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। तो इसमें एक एग्जांपल है मेरे दोस्तों की जो कि यहाँ जिनको बैठे हैं कि तारिक अजीम, मैंने कहा कि बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है इंग्लैंड में, लेकिन ये डस्का के करीब गाँव में पैदा हुआ था और इसके लिए डस्का से के गांव से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आना एफएससी पढ़ने के लिए उससे बड़ा जंप था एज़ कम्पेयर टू जब वो पीआईसी से इंग्लैंड गया था। तो जो सोशल मोबिलिटी है वो मेरा ख्याल है कि आसान नहीं होती, स्पैन्स ओवर जनरेशंस। और इसी तरीके से जो आपकी किस्मत है, जो आपकी डेस्टिनी है, अक्सर का ये डिफाइन करती है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और आपका सोशल स्टेटस उस वक्त क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी रो में से कोई साथ खड़े होकर सवाल पूछे, वरना मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, आखिरी रो से कोई स्टूडेंट मेल या फीमेल खड़े हों और बताएं अपना एक्सपीरियंस। बताएं, ज़रूरी नहीं कि आप सवाल पूछें, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं जो हाउसिंग की सिचुएशन क्या है और आपके जो मुलाजिम हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपके कुक हैं, आपके माली हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी दूर से आए हैं। जी, कोई साहब वॉलंटियर करना चाहें, खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। और जी, मेरा ख्याल है कि देयर इज अ लॉट ऑफ शाइनेस एंड रिलक्टेंस राइट नाउ। तो जब आप सोच रहे हैं, ये सोचिए कि जो जिन लोगों को आप जानते हैं, मे बी नॉट डायरेक्ट योरसेल्फ, लेकिन पीपल हु वर्क विद यू, हु यू रिकग्नाइज, कि उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, वो लोग जो कि पुअर सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर मैं आपका कमेंट मांगूंगा।
حامد سے میرا یہ سوال ہے، حامد یہ بتائیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈاکیومنٹری فلم میں، میڈیا میں، اور ایکچولی ایک جو ہالی ووڈ کی فلم ہے کہ جو شینٹی ٹاؤنس ہیں، جو سلمز ہیں، وہ انڈیا میں کہیں زیادہ ہیں. پیپل ہو لیو ود کائنڈ آف ہاؤسنگ وچ از کمپلیٹلی ڈپرائیوڈ. جیسے کہ ممبئی جیسے شہر ہیں، یا برازیل کے بہت سارے شہر ہیں، ارجنٹینا کے ہیں. تو اس طرح کے شینٹی ٹاؤنز، اس طرح کی ہیوج پاپولیشنز ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی. کیا یہ امپریشن صحیح ہے؟ اور جو رورل جو اربن پور ہیں یا اربن ہوملیس ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کوئی بلیسنگ ہے، شاید بلیسنگ نہیں ہے. بیکاز جو جن کنٹریز میں آپ کو شینٹی ٹاؤنز نظر آتے ہیں یا اربن گیٹوز نظر آتے ہیں، وہ ملک ہیں جہاں پہ بڑی ہائی اسپیڈ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. اور جب ہائی اسپیڈ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو لیبر کی موومنٹ ہوتی ہے فرام رورل ٹو اربن ایریاز، وہاں پہ یہ گیٹوز کا جو ہے بننا سب سے زیادہ پرومننٹ ہے. دیکھیے ممبئی میں ہے، دلی میں ہے، یا جو بھی ان کے انڈسٹریل سینٹرز ہیں، ان کے ارد گرد یہ ساری پلازا کی بھی ایریا کی فلوروں کے ارد گرد آپ کو سب کچھ ملتا ہے. ہمارے یہاں انڈسٹری جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے ٹورڈز دو، ان کو ہم ناردرن ایگلومریٹ کہتے ہیں اور سدرن ایگلومریٹ کہتے ہیں. نارتھ میں یہ لاہور، شیخ پورہ، فیصل آباد، گجرانوالہ کا ایریا ہے جہاں پہ انڈسٹری لگی ہے. 30% آف انڈسٹری ادھر ہے. 65% آف انڈسٹری جو ہے کراچی میں لگی ہوئی ہے. ہمارے کراچی اتفاق سے کچھ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ کافی واسٹ ایریاز اویلیبل تھے. وہاں پہ شروع میں پرابلمز آئیں اور یہ خدا کی بستی اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، دیٹ انٹرونشنز آر میڈ. اور کچھ گیٹوز بھی تھوڑے بہت ملتے ہیں، کچھ لاہور میں بھی نظر آنا شروع ہوئے، کچھ فیصل آباد میں بھی. بٹ یہ جو ہے وہ زیادہ تر آپ سمجھ لیں کہ زیادہ اس چیز کی وجہ سے ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہمارے ملک میں، کیونکہ ٹوٹل انڈسٹریل یونٹس اباؤٹ 350,000 ہیں، 3,50,000 کے قریب ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب جب ہم جائیں گے انڈسٹریلائزیشن کی طرف، یا جس طرح کہ ہم اربن ساری فیسلٹیز شہروں میں کر رہے ہیں، تو اس میں پرابلم جو ہے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تھینک یو ویری مچ. میں صرف دو چیزیں کہنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل یہ کہ ہم سارے بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو برنگ واٹر، لوگ استعمال کیسے کریں، اس کے طریقہ کار کیا ہے. پر ایکچولی ہماری انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل 100 فٹ ہر سال نیچے جاتی ہے. The real question that a university should ask is how can we conserve water? آپ اس شہر میں دیکھتے ہیں کہ گرین بیلٹ کے نام پہ روڈ ڈیوائڈر بنے ہوئے which have never been green. ان کے لیے ٹینکر رکھے ہیں، ان ٹینکروں کے لیے ڈرائیور رکھے ہیں. ٹینکر پانی بھر کے جاتا ہے، دوپہر کو 2 بجے پودوں پہ ڈاکہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے. آدھا پانی سڑک پہ گرتا ہے، 1/4 پانی اس گرین بیلٹ میں گرتا ہے جو کبھی گرین نہیں ہوتا. So I think this is a very good initiative. We need to come into these things. Second thing, انڈین میں لوگ ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں؟ یہاں کیوں پہنتے ہیں؟ Because you empowered them, you made them realize that this is for your safety. ہم یہاں صرف قانون سے پہنانا چاہتے ہیں، جرمانہ کر کے پہنانا چاہتے ہیں. ہیومن نیچر ہے، وہ کبھی ایسے نہیں سیکھتا. ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اس میں تمہاری بچت ہے، تم ہیڈ انجری سے بچو گے. And they're convinced. Once they're convinced, the 5-year-old child will tell his father, آپ باہر نکل رہے ہیں ہیلمٹ پہن کے نکلیں. سو ہمیں بنیادی چیزوں پہ جانا پڑے گا. ہمارا جو ایشو ہے وہ کنزرویشن آف واٹر ہے. سولر لگے، میں آج کل روزانہ فیز 6-7 میں سے گزرتا ہوں، مٹی سے اٹے پڑے ہیں، سارے سولر لگے ہوئے ہیں مگر مٹی سے اٹے پڑے ہیں. سو وی نیڈ ٹو لک انٹو دی ایفیشینٹ ویز آف ورکنگ. میں 1993 میں پہلی دفعہ جب MIT اور ہارورڈ دیکھنے گیا تو وہاں میوزیم میں ایک مشین رکھی تھی جس کے اوپر ایک بجلی کا بلب تھا اور نیچے ایک سولر پینل تھا. And it produced electricity. And then to teach the students, اگلی پلیٹ کے اوپر انہوں نے تھوڑا گن لگا دیا. انہوں نے کہا ایفیشینسی کم ہوگی، تمہارا پنکھا آہستہ چلے گا. So I think they realized that in 1993 جب ابھی سولر پینل کا تصور بھی بہت کم تھا اور ہمارے لاہور شہر میں سارے سولر لگے ہوئے جو بندے ہیں. آپ کے سوال کا جواب پروفیسر فہمیدہ نے اور پروفیسر شکیلہ زمان نے in 1997 ایک پیپر پبلش کیا تھا، The Health Indicators of Slums, Urban Slums versus Rural Population.
urban slum were the worst category of people. So हमारे urban slum, they also mentioned about the size of the slums in Lahore, which must have increased many times, but it was a big pointer. पब्लिश होने का मकसद और रिसर्च का मकसद होता है कि हम उसका कोई जवाब ढूंढेंगे, हमने जवाब ही नहीं ढूंढा. We just put it on the rack and we just left it to be cited as a reference. So I think हमें जो चेंज करना है वो अपना एटीट्यूड, हमें इन चीज़ों के ऊपर फिर कोई नतीजा निकाल के आगे कोई तरीका कार भी ढूंढना है कि हमने आगे चलना कैसे. So this is my take on all of these housing issues. जी, मेरा ख्याल है कि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. हमें 1 बजे ख़त्म करना है और 4 मिनट बाकी हैं. तो लेकिन ख़त्म करने से पहले एक नॉन मेडिकल इवेंट भी होगा कंपोनेंट, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगा. लेकिन इससे पहले मैं वासिफ नागी साहब से पूछना चाहता हूँ कि वासिफ नागी साहब ने लाहौर की आर्किटेक्चरल हेरिटेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. आप लोग अगर इनका कॉलम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, तो आप इनको बखूबी जानते होंगे. ये थोड़ा सा रिलेटेड है क्योंकि डायरेक्टली हाउसिंग से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग और आर्किटेक्चर से ताल्लुक़ है. तो नागी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो केई के ऊपर आपकी बड़ी नज़र है कि केई की जो बिल्डिंग है, मेरा ख्याल है आपने महमूद अयाज साहब के साथ मिलकर उसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की है, उसके बारे में लिखा भी है. तो आपके क्या तासुरात हैं कि केई की जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या इससे बेहतर भी कर सकते हैं? वासिफ नागी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इज़्ज़त मां प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज साहब, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं क्योंकि महमूद अयाज साहब का तहे दिल से इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह, इंसानियत के नाते बहुत अच्छे इंसान हैं, लोग मुझे बहुत इज़्ज़त करते हैं. और क्योंकि मेरा किंग एडवर्ड से बहुत पुराना ताल्लुक है, 1981 से लेकर आज तक जितने भी प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर आए सबके मैंने इंटरव्यूज़ किए. महमूद अली मलिक साहब बैठे हुए हैं, इनके मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए, बहुत इनसे लगा. ठीक है, प्रोफेसर साकिब सईद साहब बैठे हैं, अबरार अशरफ साहब बैठे हैं. अतर सईद साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे पिछले साल कुछ दिन पहले मुलाकात की और उन्होंने मुझे दावत दी. और किंग एडवर्ड से तल्लुक मेरा जो है 2 लफ्ज़ों में बयान करके फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ. मेरे फूफा पहले MBBS और BDS थे, डॉक्टर रशीद राबी. उस ज़माने में वो लोग MBBS करने के बाद 2 साल का कोर्स करके BDS भी करते थे, और वो लाहौर के पहले MBBS BDS GP थे जिन्होंने 50 साल प्रैक्टिस की लाहौर में. तो एक तरफ तो ये, बाकी मेरी फैमिली के 25 लोग किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट बने. ठीक है, तो ये मेरा कई से ताल्लुक है. बाकी मुझे डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने बहुत इज़्ज़त दी, उन्होंने मुझे IRP का मेंबर बनाया. महमूद अयाज साहब ने कंटिन्यू रखा इस सिलसिले को. महमूद अयाज साहब ने एसेंस भी मुझे बनाया. ये मेडिकल से तो मेरा बहुत ताल्लुक है. महमूद शौकत साहब मेरे क्लास फेलो हैं. अजीमुद्दीन जाहिद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक है, जब स्टूडेंट लीडर थे, अभी लीडर है, तो इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है. अब बात आती है लाहौर की. पानी की बात अभी की सईद साहब ने और दूसरे दोस्तों ने. लाहौर मेडिकल स्कूल जिसे आप लोग किंग एडवर्ड कहते हैं, इसके प्रिंसिपल साहब 1880 में लाहौर का पानी चेक किया करते थे, और उस पानी की रिपोर्ट बकायदा जाया करती थी वायसराय. उस ज़माने में लाहौर के रावी दरिया में 14 अक़साम की मछलियाँ पैदा होती थी. ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है. आज हज़ारों अक़साम के कीड़े मकोड़े हैं. ठीक है, इसी रावी में कछुए भी थे, इसी रावी में मगरमच्छ भी थे. ये वो रावी है जहाँ पे तमाम कॉलेजों की किश्तियाँ खड़ी होती थी. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की किश्तियाँ होती थी, गवर्नमेंट कॉलेज की किश्तियाँ होती थी, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की, सिविल लाइन की, FC कॉलेज की, और बाकायदा मुकाबले हुआ करते थे. इवन लड़कियाँ किश्तियाँ चलाया करती थी और कोई ना फरावी का खिताब मिला करता था. ये लाहौर में ख़त्म हो गया. लाहौर, जिस लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लाहौर में एक बड़ी खूबसूरत तकरीबात होती थी. और मुझे आज भी याद है कि जब कोई ना फरावी का मुकाबला होता था तो आपके रावी के तीनों पुल
लोगों से भर जाते थे कि लड़कियाँ किश्ती चला रही हैं, और उसके लिए वो शर्त ये होती थी कि रावी का जो रेलवे का पुल है और नए पुल से रेलवे के पुल तक उल्टी कुश्ती चला के अपनानी है, और जो लड़की विन करती थी उसे कोई ना रावी कहा जाता था। वो मुकाबले खत्म हो गए, वो खूबसूरत शहर खत्म हो गया जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ। कहने की बात कि आबादी ने इस शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, और ये मुल्क और ये शहर क्यों बर्बाद हुआ उसकी 3-4 बेसिक वजूहत हैं। नाक़िस मनसूबाबंदी है, आबादी है, करप्शन है, और ऐसे लोगों को बढ़ा दिया गया सीटों पर जो नाअहल थे, जिन्हें उन सीटों पर बैठने का अहल ही नहीं थे, जिन्हें प्लानिंग नहीं थी, नाक़िस मनसूबाबंदी थी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उन लोगों को मैं समझता हूँ जिम्मेदार जो इसकी पुरानी आर्किटेक्चर को सेफ नहीं कर सके, जैसे कि न्यूटन हॉल बड़ा खूबसूरत हॉल है, इसके बारे में मैंने 4-5 आर्टिकल लिखे, और मैं महमूद याद साहब का तहे दिल से मशहूर हो गया, उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी पूरी कोशिश थी कि न्यूटन हॉल गिर जाए, ठीक है, और क्यों गिर जाए ये शौकत साहब को पता है। सो हमने उसको हॉल को बचाने के लिए मैंने उस पर आर्टिकल लिखे, फिर नहीं दादा साहब की मेहरबानी, तो उन्होंने बकायदा उस पर एक रिपोर्ट बनाई कि ये हॉल बचाया जा सकता है। अभी हाल ही में हमने लाहौर का बड़ा खूबसूरत कमिश्नर हाउस गिरा दिया जो तारीखी था। तो CNW वाले जो महकमा है उसका काम ये है कि जो लाहौर की हर तारीखी इमारत है उसको गिरा दिया है। आपका किंग एडवर्ड इंतहाई खूबसूरत है फ़न तमीर के लिहाज से, और अभी मुझे महमूद नियाज़ साहब ने मौका दिया था कुछ दिन पहले, मैं ऊपर भी गया था, और वो हॉल के जो आपके दोनों गुंबद उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ कि वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपका कॉलेज एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज है, और किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट तक पूरी दुनिया में है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉलेज पायनियर है पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन का, कि बाकी जितने मुल्क में मेडिकल कॉलेज बने इसी के बच्चे हैं, इन्हीं लोगों ने जाके इसको किया। तो सिंपल सी बात साथी सी है कि यहाँ का लाहौर जो है बड़ा खूबसूरत शहर था, इस लाहौर में हर घर में कुआं होता था, वो कुएँ ख़त्म हो गए। इस लाहौर में अगर आपको बताऊँ 550 हिस्टोरिकल जगह देखने वाली, जो आस्ता आस्ता कम होती होती अब सिर्फ 300 रह गई है, और हमारे बहुत सारे कब्ज़ा माफिया जो हमारे यहाँ हैं उनको कब्ज़ा कर रहे हैं। तो मैं अदर सईद साहब जो कि जिन्होंने इसमें बड़ा अच्छा एक इवेंट रखा है, आप ज़ाहिर है आप मुझसे मिल के डॉक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि आप इसी लाहौर से इनका तल्लक है। लाहौर से कितने लोगों का तल्लक है लाहौर में नहीं बैठेंगे, आप तो खड़ा करें, बड़े अफसोसनाक सोच जा रहा है, इससे तो बेहतर है जिक्र ना करो। अगर लाहौर से 3 लाहौरी बैठे तो अपनी बैठे हैं, हम तो मुझे लगता है 10 साल बाद लाहौरियों को रह गए। असल में इस लाहौर को जो बर्बाद किया है वो लाहौर के अपने लोगों ने और बाहर से हमलोगों ने किया बड़ी मादर के साथ, क्योंकि उन्हें इस लाहौर का पता नहीं था कि इसकी क्या शहर इसकी क्या अहमियत है। बड़ी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसको मेरी बात बुरी लगे तो बड़ी मादर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि लाहौर एक बड़ा खूबसूरत तारीखी शहर था। इसका हुस्न, इसका सकाफत, इसका कल्चर, इसकी खाने पीने की जो कहते हैं तरीक़ाकार, इसकी तारीखी बिल्डिंगें देखने वाली, इसका फ़न तमीर देखने वाला है। और हर बात मैं अपनी शॉर्ट करता हूँ, इतना मैं कहूँगा कि इस कॉलेज में जो तारीखी इमारत जो रह गई हैं उनको बचाया जाए, उनको सेव किया जाए। आपका ये हॉल, और सच्ची बात ये है कि मैं डॉक्टर महबूब साहब ने उसे बहुत अच्छा ऐसा खर्च किया है, लेकिन बड़ी मादर के साथ उस बिल्डिंग का किंग एडवर्ड की बिल्डिंग के साथ कोई मैच नहीं करता। काश कि इतना पैसा लगाने के बाद वो बिल्डिंग और किंग एडवर्ड का फ़न तमीर आपस में मैच करता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा इस कॉलेज से क्योंकि एक जज्बाती तल्लुक़ है, तो ठीक है बहुत अच्छा हॉल है। फिर उसके बाद आपका जो सेंटर बना हुआ है उसका भी फ़न तमीर आपके साथ मैच नहीं करता। इस कॉलेज की मैं तो अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि FC कॉलेज वाले अपना हॉल बेच रहे हैं, तो किंग एडवर्ड को चाहिए कि वो हॉल यही हॉल है उसको परचेज कर लें, और आपके कॉलेज के पास इतना पैसा है कि वो सारे मिल के पैसा इकट्ठा करें और उस हॉल को लेके उसको म्यूज़ियम बनाएं या उसमें कोई तारीखी चीज़ें बनाएं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। मैं डॉक्टर सारा अब्दुल्ला के बड़ा मशहूर हूँ कि वो अक्सर मुझे बुलाती रहती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो टाइम भी नहीं दे सकता, मादर करता हूँ।
और महमूद याद साहब थे। और मैं ये सच कह रहा हूँ, ये क्योंकि मैं तारीफ नहीं कर रहा, ना कोई बटरिंग कर रहा हूँ, ना कोई मक्खनबाजी कर रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ कि अगर महमूद याद साहब को 5 साल यहाँ मौका मिल गया, लेकिन ये कॉलेज अदारा आपका उस पुराने किंग एडवर्ड का जैसा हो जाएगा जैसा कि था। ये मेरा क्योंकि यकीन भी है और मैं समझ कर रही हूँ, क्योंकि इस कॉलेज में कई चीज़ें खराब हो गई। दोबारा मैं आपकी हिम्मत को ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, आगे बढ़ने का मौका दे और इस कॉलेज को एक तारीखी कॉलेज बनाने में वो अपना रोल अदा करें। क्योंकि देखिए हम सब लोगों ने चले जाना है, ये तस्वीरें जो लगी हैं ये सब लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, किसी न किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी न किसी ने एक ईंट लगाई है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोग जाकर एक ईंट निकाल कर लेते हैं, तो ईंट निकाल कर न ले जाए, एक ईंट और लगा दी जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I am pleased to say that we have come to the conclusion of this symposium. तो आप जिस नॉन मेडिकल कंपोनेंट का मैंने आपसे वादा किया था उसकी तरफ आते हैं। मेरे साथ हामिद साहब जो बैठे हैं कि एक हिडन खसूसियत ये कि शायरी करते हैं। जब इन्होंने डॉक्टरी की तो कुछ अर्सा डॉक्टरी की, उसके बाद सरकारी नौकरी शुरू कर दी और महकमा टैक्स में भर्ती हो गए। और महकमा टैक्स में इन्होंने तालीम काफ़ी हासिल की, लोग पैसे बनाते रहे और ये शायरी लिखते रहे। तो इस वजह से पैसे इनके पास नहीं है, लेकिन एक किताब लिखी है शायरी वाली, हुई है अपनी दरमियानी उम्र में, इसका नाम है 18वीं कक्षा। तो ये तो खैर ज़ाहिर सजीदा शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो इनका एक बहुत ज़बरदस्त शेर है जिसकी खातिर मैं जैसे किसी क्लासिक शायर ने कहा था कि मैं अपना दीवान देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं अपने दोनों दीवान देने के लिए तैयार हूँ जो कि मैंने भी नहीं लिखे। तो वो शेर कुछ यूँ है कि वाइज़ों ने धो लिए हाथों से धब्बे खून के, वाइज़ों ने धो लिए हाथों से धब्बे खून के, और पेशानी पे सजदों के निशान रहने लगे, और पेशानी पे सजदों के निशान रहने लगे। तो ये तो एक बहुत खूबसूरत सजीदा शेर है। और एक गैर सजीदा शेर इनका ये है कि सख्त सर्दी है मेरी जान, नहीं आज रहने दे मेरी जान बहुत सर्दी है, आज रहने दे मेरी जान बहुत सर्दी है, और गीज़र भी नहीं ऑन बहुत सर्दी है। तो बाकी की ये जो गज़ल है मान का दुलारा वो हामिद एक सब आपको सुनाएंगे। सरे हशर बख्शा ना जाए जिसने देखा तेरी आंखों का पेशेमान। इसे सामने ले आए बात को। ये ढेर उम्र की शायरी है जो नौजवानों की समझ में 10-20 साल ठहर के आएगी कि अब तो सीधी नहीं होती कभी मुड़ जाए जो टांग, अब तो सीधी नहीं होती कभी मुड़ जाए जो टांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत में महबूब न मांग। जिस गज़ल का अतर साहब जिक्र कर रहे हैं कि अता शाह एक कोयटा के बहुत अच्छे शायर थे, घर से बाहर है ज़मिस्तान बहुत सर्दी है, तो उसका पहला जो मुतरदा शेर था मैंने पढ़ दिया, उससे आगे मैं पढ़ूँगा कि अब यही आज़म है। इस साल वैसे कि सर्दी इतनी पड़ी भी नहीं है लेकिन उन ढेरों को लगती है। अब यही आज़म है चाहे तो क़यामत गुजरे हम न बदलेंगे ये बनियान बहुत सर्दी है, और चाँद पे झुक के किसी अब्र ने सरगोशी की, चाँद पे झुक के किसी अब्र ने सरगोशी की, घर में रहते हैं मेहमान बहुत सर्दी है। और वो जो बरसों में मरी नथिया गली कहते थे अब वो ये कहता है मुल्तान बहुत सर्दी है। और जेब में हाथ लिए एक सिपाही बोला आह कैसे करूं चालान बहुत सर्दी है, और सर्द हाथों से छुआ जब तो तड़प कर बोले, सर्द हाथों से छुआ जब तो तड़प कर बोले भाड़ में जाएगी रुमान बहुत सर्दी है। और ये जो कि पिछले साल की गज़ल है, तो काश का बिना इजलास में कोई कह दे गैस मंगवाइए कप्तान बहुत सर्दी है। जब खत्म हो रही है तो मैं आपको
थोड़ा एहराज मानी का एक शेर सुना देता हूँ। महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। थैंक यू वेरी मच। और जो आर्ट एंड साइंस को जिस आपने एंड पर उसका मिजाज दिखाया, दैट इज रियली वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग। और मुझे प्रोफेसर महमूद अली मलिक की एक बात याद आ गई कि यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स बैठे हैं कि अगर आपके हाथ गर्म नहीं हुए और आपने पेशेंट के ऊपर अपने ठंडे हाथ रखे हैं और उसके चेहरे में नागवारी का एहसास आ गया है, तो ये मत समझिए कि अब आप मेडिसिन में पास हो सकते हैं। तो आप समझ जाइए फिर कि आपका रिजल्ट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई जो आज भी हमारे काम आ रही हैं। Now I would like Professor Mahmood Ali Malik to join us on the stage along with all the panelists. Please come forward. We have to give certain shields and awards to our panelists as well as speakers, organizers and the award winners of the research poster competition. For the first certificate, Dr. Tufail, I would like you to please, and Dr. Shafiq Gill, the Kanka UK chairperson, Professor Babinda Dubel, along with Professor Mahmood Shaukat. Sir, please come forward because we want to give certain prizes. वासिफ नागी साहब, आपको देख के हमेशा तहजीब व तमद्दुन की आला अरूज याद आती है, जिस तरह खूबसूरती से आप तमाम चीज़ों का अदा करते हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि इनका जो कॉलम है लाहौर में वो ज़रूर पढ़िएगा। एक दफ़ा जो शख्स लाहौर आ जाए वो सब लाहौरी है। ये मेरा एक बयान है शेर से, जिसे शायद वासिफ नागी साहब अपने मेरे कॉलम में उसका जिक्र करें। So we would give the certificates to the speakers organizer, and the first certificate is for Dr. Asif Khan. He has hosted the first morning session, so we have two certificates for you, one as a speaker and the other is as a host. Thank you very much Dr. Asif Khan for a wonderful hosting. Our next is Dr. Rizwan Nasir. I hope he has left. Then we have Professor Balkis Akhtar. She has chaired the session on PIC, PCI, percutaneous intervention. Our next certificate is for our student Qasim Mahmood. He has chaired the session again on PCI. Our next is for an organizer who has done a wonderful work, Professor Dr. Gulfarin Wahid. Thank you very much, Madam, for joining us today. Next is for housing session, Imrana Tiwana, Shoaib Ahmed, Kamil Khan Mumtaz, Dr. Asif Jah, and Mr. Wasif Nagi. Next is the winners of the poster competition, most awaited event, and I would request Dr. Tufail to please come forward and announce the names, because this is one of the most wonderful competition where all of the researchers from all over Pakistan, they participated, and in the end we have few winners. So I would like to invite Dr. Shafiq Gill along with Dr. Tufail to announce those prizes. Assalamu alaikum. I think just to give you a bit of an idea, so Kanka UK has been for a number of years now sponsoring some research activities. So basically, we invite posters from all the sort of individuals, and then we go through a shortlisting process, which is quite an exhaustive process. But this year we received about over 60 posters, which
which we had with a shortlist 10 for oral presentations. And myself and Dr. Tufel have gone through an exhaustive process of then going through those presentations. So there are 4 awards. 2 awards for the 3rd position, one by Dr. Rana Hafizur Rahman, who is one of the KE alumnus. The second one is Dr. Turab Sayyed. The second award is by Dr. Tabinda Dugal, and the first award is by Dr. Abdullah Rijal. They are 20,000 each for the 3rd awards, 30,000 for the second award, and 50,000 for the first award. So the 2 awards for the 3rd position are, one is a study about Empty Place is Dead, by Dr. Akibur Rahman from King Edward Medical University. And the second, 3rd awards, Akibur Rahman. The second, 3rd awards is for a poster about peripheral endovascular intervention, same day's discharge, by Usama Khalid and Zainab Mehdi from the University. And before I pass on to Dr. Tufel to announce the second and the first winners, I also wanted to mention about the other Campa UK charitable activities. Obviously, we heard a lot about the flood campaign and the work we've supported. But also, Campa UK started the breast cancer diagnostic funding a few years ago. And this year, we have alhamdulillah collected 1.5 million Pakistani rupees, which we will be passing on to the department. Thank you very much, everyone who has participated in the poster competition. Now I have the pleasure to announce second and third prizes. Okay, first and second. So first we'll start with the second prize. I think this is a wonderful study by the Psychiatry Department of Mayo Hospital with the name of When Healers Get Wounded by Dr. Mada Fatma and Psychiatry Department. So second prize goes to When Healers Get Wounded by Dr. Mada Fatma. Okay, so our first prize goes to very good initiative and a study done by students and faculty from Fazaya Medical College, Artificial Intelligence in HRCT of COVID-19 patients, Dr. Shayan Rizwan. This is a tricooperative also. And Asbullah Wasim, Dr. Shayan Rizwan and Dr. Asbullah Wasim. Thank you very much. Thank you. Congratulations to all of you. Thank you very much. And now we have the refreshments that are ready for our faculty, guests and organizers, and I would request all the students that you would also join the refreshment, but you have to be patient a little and have to bear with me a little more. Thank you very much for a wonderful session. Thank you very much all the organizers